Assalamu alaikum everyone. Very warm welcome to Vantage Developers Presents Game on Hair Mehun Erin Holland, and what a game we have in store for you today. It's do or die for Pakistan in the ICC Men's T20 World Cup, of course being hosted all the way over in the US of A and the West Indies, but all eyes will be on New York today because the men in green, well, they'll be licking their wounds after a difficult loss to India, but they absolutely have to get up above Canada today, who'll be riding high after a wonderful win over Ireland just a few days ago. So much to discuss here on the only place to catch the T20 World Cup across the screens of PTV Sports. We've got all of the best pre-game analysis and post-match analysis, of course, thanks to our wonderful expert panel. But before we get to introducing them today, it's my time to introduce my Khubsurat co-host, Rohat Nadeem, looking beautiful in your Pakistan green. She's patriotic today. What do you think? Do they have it in them to keep themselves alive? Well, third time's a charm, Erin. But thank you so much for that lovely introduction. And as you said, Canada are going to be riding higher after that win against Ireland by 12 runs in New York. All eyes will, of course, be on the pitch once again. Fourth match in a row on in the New York Stadium. And we know that आज एक fresh pitch होगी जिस पे match खेला जाएगा. But still a lot for Pakistan to win back in this game, especially not getting off on the right mark against USA. पहले मैच में और दूसरे मैच में जिस तरह इंडिया से हम एक जीती हुई गेम हारे थे, बहुत सारे इमोशनल रिएक्शंस थे उसके बाद और काफ़ी रिफ्लेक्शन भी हुई. आपने हमारे शो को भी फॉलो किया, हमारे एक्सपर्ट पैनल से भी सुना. बट एक और मौका है और आई थिंक आखिरी मौका है पाकिस्तान के पास. इफ़ दे वांट टू स्टे अलाइव इन दिस वर्ल्ड कप, they have to win today. One thing is for sure, something about Pakistan in World Cups, the further they get backed into a corner, they seem to find their way out of it. Let's hope that's exactly what can happen today. But to unpack all of the action, of course, we have our wonderful expert panel. It's my absolute pleasure to welcome back into the studios of PTV, the fastest man on the planet still to this day, the Rawalpindi Express, Mr. Shoaib Akhtar. Bahut shukriya for joining us, sir. Thank you. Mr. Martin Guptill, our wonderful Kiwi, all the way from New Zealand. He's joining us on the panel again, as he is every single day here. One of the fiercest strikers in white ball cricket, still to this day. And of course, so much experience with 7 World Cup appearances under his belt. Marty Party, thank you so much for joining us again. Thank you. उनके साथ हैं जी हमारे World Cup winning captain, the only man to lift the T20 World Cup trophy for Pakistan, the iconic Yunus Khan. Yunus, welcome back to Game On. It's a pleasure to have you, like always. Or with him is sitting one of our finest all-rounders across formats. A lot of various uncountable contributions that continue to this day for Pakistan cricket. We have the Professor Mohammad Hafiz. Welcome back to Game On. It's a pleasure to have you. And let's start the discussion. Let's start our build-up for Pakistan versus Canada in New York. A lot of eyes will be on the conditions as well. So let's just start from there. Shoaib, 4th match in a row in New York. Fresh pitch पे आज का मैच होगा, लेकिन अभी तक जो स्टैट्स जा रहे हैं ग्राउंड के, जो लो स्कोरर्स हम देख रहे हैं, क्या उम्मीद है और किस चेंज इन पर्सपेक्टिव के साथ पाकिस्तान को, स्पेशली बैटर्स को, आज का मैच अप्रोच करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कि जो हो गया सो हो गया. Did you learn your lessons? Of course they must have. I hope they did. Again, the chances to create history is not with the Pakistan, is with the Canada. Again, they would probably try to replicate the performances like USA. So, yaar, hum bhi one of those people that have beaten Pakistan in the World Cup. How's that for a change in 2024? So, I think odds are against us as usual because we're very demoralized as a team. I mean, when you lost the game, such as against Indian, it's hard to come back. But you know what? It's you're professional cricketers. I wish you best of luck, and make sure you don't give any chance to Canada. But Canada has certainly has a chance to turn the tables against Pakistan. The reason why is the surface. If they manage to get around 120 above batting first, that's going to be a problem. Or bowling first, that's going to be a problem for Pakistan. How are you going to deal with it? Please show a bit of maturity, how to chase total, just prove us wrong, prove other people wrong, go out there, enjoy it. It's okay, guys. I know you have been taking a lot of beating, a lot of criticisms, but that's bound to happen.
I wish Pakistan to best of luck. It's going to be a very tricky game. That's all I'm going to say. Yeah, it's time for Pakistan to really assert the dominance we expected in this group. It was a group that we thought were one of the weaker ones available. Obviously, India, the big superpower they had to overcome, but they would have thought that given the likes of USA and Canada in that pool, that they would have been sure things, Roha, and that's not exactly what has happened so far. USA obviously getting above Pakistan in that first match, but they have a chance to assert the dominance that we know and expect from the men in green today. So I come to you, Marty, because losing a game like India 2 games ago, almost the fact that they haven't had time to really lick their wounds too much might be a positive in this circumstance. How would you go about regrouping, heading towards a must-win game like this, if you could sort of put your mind into how they must be feeling at the moment? What advice would you give them heading into now a crucial must-win clash? Yeah, it is probably a good thing. I think, you know, when you have games so close together, there's not a lot of time to dwell on what's happened the day before. You have to move on quickly. There must be a reflection period, and that is a very small reflection. It's just mainly on yourself and what you've done, and then how you can improve for the next game. Because no doubt they would have probably had a day off, a day of rest, and then straight into the next game. So go and have your batting, bowling meetings, or however the Pakistanis do it. Talk about the Canadian team and how best to approach it, how best to put your best foot forward to help the team get through what has been a tough couple of games. You know, they haven't been too far off. They've been such close games, and Pakistan have just lost key moments at certain times, and it's T20 cricket is such a game of fine margins. It's about winning those key moments. And how do they do it today? They just got to knuckle down, take a bit of responsibility, some accountability for their job in the team, their role in the team, and go out and get the job done. It's as simple as that, because their backs are against the wall. The writing's on the wall. They need to win 2 games. They need to rely on a couple of other results to go their way, and they can still make it through. So they have to have the belief that it'll happen. Otherwise, if they don't, they've already got themselves out of the tournament. Right, it is the belief and the conviction that really shows you know what a team can do on any given day, especially अब इस context में यूनिस के आपको पता है 3 दिन में आपके 2 मैचेस हैं, ठीक है. mentally you don't have time to sit back and reflect and think कि क्या क्या हुआ, लेकिन at the same time इतनी noise है इर्द गिर्द. चेयरमैन आ रहे हैं, वो अपने बयान दे रहे हैं, हेड कोच आ रहे हैं, वो अपने बयान दे रहे हैं. हर क्या बयान दे रहे हैं? हेड कोच ने भी यही कहा है कि वी नो के बैटिंग ने अपना रोल प्ले नहीं किया, और कुछ प्लेयर्स को ये भी मैसेज दिया है कि अगर आप अपना तरीका चेंज नहीं करेंगे तो वी विल ऑब्वियसली फाइंड अ वे टू यू नो गेट रिड ऑफ यू या रिप्लेस यू. चेयरमैन साहब ने क्या कहा? और चेयरमैन साहब की हम सबको याद है, उनका बयान भी यही था कि छोटे मोटे चेंजेस अब नहीं करने, अब एक मेजर सर्जरी होगी, एक मेजर चेंज होगा. तो इस तरह की चीज़ें जब प्रिंट हो रही हैं, जब सामने आ रही यूनिस, आई एम श्योर आप भी ऐसे पोजीशन में रहे हैं. व्हाट विल द टीम बी थिंकिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट? नहीं होना चाहिए, बहुत अलग है. अगर ये पाकिस्तान ये मैच बहुत अच्छे मार्जिन से जीत जाते हैं और अगले मैच भी जीत जाते हैं, और उसके बाद कहीं से ये आ जाते हैं, और उसके बाद कहीं सुपर 8 में चले गए, टॉप 4 में चले गए और वर्ल्ड कप जीत गए, तो फिर क्या कहेंगे हम? बड़ा प्रेशर किसी और देगा. नहीं तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल से थोड़ा लिटिल बिट अर्ली है ये. 2 मैच होने 3 दिन में तो वैसे ही रिजल्ट आ जाना है ना कि हमने क्या करना था. थोड़ा सा जल्दी है, हम करते हैं बाजुकार कि एक मैच. हाँ ठीक है, अगर हम दोनों मैच की पाकिस्तान की बात करें तो बहुत ज़्यादा क्लोज थे मैच, हम वो की मूवमेंट नहीं जीत सके, तो हम ये मैच हार गए. तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जाने दें, लेकिन बात वही है कि आ जाएँ. और मैं ये नहीं कहूँ कि सीनियर प्लेयर सिर्फ आके फ्रंट से लीड करें. हर प्लेयर के लिए आज जो है एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, चाहे वो बैट से कर रहे हैं चाहे बॉल कर रहे हैं. और एक ये पॉइंट जो हम बाजुकात कह देते हैं ना कि बैटर्स ने आज अच्छा किया तो बॉलर्स ने अच्छा नहीं किया, बॉलर्स ने अच्छा किया तो आज बैटर्स ने, इसको छोड़ दें. ये जब आप ये बात जहनों में डालते हैं ना लोगों के, टीम के, कि यार हम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन बैटर अच्छा नहीं कर रहे हैं. अब आज अगर बैटर्स रन्स कर देते हैं और बॉलर्स को डिफेंड नहीं करते या बॉलर परफॉर्म नहीं करते, तो क्या होगा भाई? इस पिच पे तो बॉलर्स नहीं करना है ना. जैसे इंडिया के बॉलर्स ने मैं करके दिखाया, उनकी बैटिंग ने उनको लेट डाउन किया, लेकिन उनके बॉलर्स ने उसको डिफेंड किया. जब आपको टीम बनना है ना, तो फिर सीनियर जूनियर बॉलर बैटिंग फील्डिंग ये नहीं है, आपको तीनों चारों शोबों में एक रहना है और परफॉर्म करना है. और फिर सपोर्ट क्या होती है? अगर मैं ग्रेट टीम्स की बात करूँ, मैं एक ग्रेट टीम है ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज़ थे पहले से, तो वो, और या इंडिया को अब ग्रेट टीम हम कह सकते हैं. उसकी वजह ये है कि जिस दिन ग्रेट टीम आप तब बनते हो जिस दिन बैटिंग नहीं करेगी,
तो बॉलिंग उसको कवर कर लेगा, जिस दिन बॉलिंग नहीं करेगी तो बैटर उसको कवर कर। हम तो इसी तरह सोचते थे, हम ये नहीं देखते थे कि जी अब बैटिंग ने कर लिया बॉलिंग। तो मेरे ख्याल से आज अपॉर्चुनिटी तो मौजूद है हर प्लेयर के लिए, जो भी खेले आए मैच विनर बने और करके दिखा दिया। क्या ही बात है कि बैक टू बैक 2 मैन ऑफ द मैच आप हो जाएं इन गेम्स में, और फिर आप देखें कि और आप सुपर 8 में आते हो और फिर कहीं समहाउ आप पहुंच जाते हो और जीत जाते हो, तो ये फॉर एवर आपको याद रहेगा ये मोमेंट। Bilkul. Mathematically, Pakistan, of course, are still in contention of moving forward. Remember, we don't have any points on the table, but the net run rate, of course, because of the margins of the defeats in the last 2 games, not a lot to worry about there, but of course, they will need to cover that up, and USA is creating a lot of trouble for Pakistan. They absolutely are, and I want to come to a man now who's got the most man of the match performances for Pakistan in the last 15 years. He certainly knows a thing or two about digging deep and making an impact at the right moments. Professor Mohammad Hafiz, who needs to dig deep today? Who are the key players that Pakistan needs to look to get this win done? Well, I think everyone has to take the responsibility. There's not a certain group of a player, I would say, like only the batsman has to do their job or the bowler has to do something very special to win the game. It's a responsibility of each and everyone participating in this game, each and everyone who involved with the team as a management. You cannot leave anyone behind. You have to back everyone, you have to take everyone along with you. So in this game, it will be more to show a right character towards the team, because sometimes it's not your performance, it's a way of behavior. How in these difficult times you behave as a team man. That's the reason you get a lot of respect within the dressing room, and also obviously if you perform well with that positive energy, it always remains within your mind, it remains within your body, because that's what Yunus said. If in these tough conditions and the situation are not going rightly for the Pakistan team, if someone will stand up and will do something special for the team and win a game for the team, that will be remembered for a long period of time. It's not about your 50, it's not about your 100, it's not about your 5er. It's all about how you take that, the job in your hand when you will be asked to do something for the team and you raise your hand up and stand up, give a stand-up performances for the team. So I think at the moment everyone has to take the responsibility. They are, unfortunately, people are bashing unprofessionally on the media, like people are criticizing the people why players are going for a dinner. So what do you think, if the guy like just finishes professional work, why he should not go outside, why he should not go for a dinner? Yeah. So these are the unfortunate things which obviously in Pakistan cricket we are very much used to, and we think this is our right to criticize in an unprofessional way. Yes, you can talk if anyone is not performing well. Yes, you have all the right to criticize in a constructive way, but you cannot bash someone just for his own lifestyle. So I think this is somewhere we need to condemn these kind of analysis by many unprofessional people on the social media, unprofessional people on the media also. They're just trying to bash some players, which I believe it shouldn't be the way to move forward. But वैसे तो पहले back in the days ना होता ये था कि जब हम मैच हार जाते थे इंडिया से, तो हम तो कोशिश करते थे यार 3-4 दिन नजर ही ना आए. पहली बात तो ये कि emotions are really high, so you want to stay put where you are, so you don't want to come out. I mean, I'm giving you a suggestion. I know I'm not saying don't go out or don't do this, but the emotions are really high. I mean, यहाँ तो back in the days people used to burn houses back in '96. Ooh. Yeah. They are just like throwing stones and everything when you lose against India back in the days. So, I mean, we lost a game in India against India in Manchester during in '99 World Cup. People used to react very differently. I mean, still people are overreacting. But what about the media at that time? Do you think I'll be very honest with you. People are taking their personal grudges out on the people. Yeah. They're settling the score with each other. I'll be very honest with you. Look, these kids watched us when they're growing up. They watched us playing. Yeah. I mean, Babar was like this kid. Was this big when he faced me for the first time. So, I mean, he watched Yunus, Hafiz, and everyone else. I mean, we're like a father figure. But the thing is, the only problem is when we are paid to voice our opinion on the TV, we had to say something. Once we know that this thing is not going right, this professional approach and intent is not right to play cricket, so we get really deeply hurt. The rest of the nation gets hurt differently. Once we see losing Pakistan like this, it just cuts our heart
into two pieces. And when you understand what know I'm the saying? potential, it would be frustrating from your perspective. I think that's the key, isn't it? It's more than frustrating, Aaron. I'll be honest with you. It's not frustrating. It's more than frustrating. You know, it just like killed us, all three of us, killed us that night. And, you know, come on. Come on, this is right there on the plate. Come on, take it. Come on. All you just have to do is just like take a single and just run up ball. Be sensible. But again, don't settle your score on the media just because for the sake of it. And I understand this is the day and age, we live in a media day and age. I understand everybody needs to get the TRP. Everybody needs to be seen and needs to be viral and everything. Well, hold your horses there, right? But given a statement during the, what Yunus said, given a statement during the tournament, this is not right. You know, you just don't do that. We love playing the blame game here. No, don't do that. When you finish the World Cup, I have been seeing, witnessing everything, every World Cup that we lose, either is inquiry committee, either we are in a NAB. I was in the commission, in the NAB accountability for, I don't know, and I said, why did you call me A for? He says, pata nahi. So I said, when was this? So 99 World Cup. So there was many of the players was sitting in the corridor, and I didn't turn up, by the way. I shouldn't be anyways. So, but the thing is, it's okay, relax. Pakistan, go out there, make sure you win it with a big margin. I know it's a difficult track. It's a pathetic track. It's fine. I get it, all of that. Why can't you get 160, 70? Come on, and get them out on 100. And we, again, हम pray करेंगे, या अल्लाह, Ireland, USA को मार दे, इसको मार दे, फिर हम पहुंच जाएं. पिछले 10 सालों से मैं यूनुस हफीज यही कर रहे हैं. Once again. Once again, yeah. But yeah, we're used to praying and depending on other teams to move forward. But this is a golden chance for Pakistan to prove everybody wrong. Everybody who's, you know, criticizing, of course, who's coming out, sharing those hot words, a great chance for Pakistan to bounce back. Yeah, the best way to silence critics is to give them a performance they can't ignore, and that's exactly what Pakistan needs to do today. But Shoaib, you mentioned the venue. A lot has been said about New York City, you know, and say what you like. I think the wonderful thing about this edition of the T20 World Cup has been the fact that now low-scoring affairs have been just as thrilling as 200-plus scores. So it is indeed. This is it. It's beautiful weather as well, which is wonderful signs. Obviously, India-Pakistan was delayed by an hour and a half due to weather, but New York City is looking a pretty picture there. And as we come to the venue numbers, Guppy, it doesn't matter whether you bat first or bat second. So the toss comes out of this, doesn't it? When we look at that, you know, team one batting first, team one batting second, it's 3-3. Average first inning score is only 108 with a run rate of 5.8. So, you know, what we saw in the Pakistan match of chasing 120 wasn't out of the ordinary. They need to reassess their mindset now and go, we're not looking at a 200 score, we're probably looking around that 220, so 120, 130 mark. 220 would be nice, wouldn't it? It would be, wouldn't it? What would be the intent of Pakistan? Should they be sent into bat on this first, given what we know about the conditions now? I guess the trend that we're seeing is the first 6 overs is really tough. You know, I think the most runs scored in it have been maybe around the 30 mark from memory. I wouldn't be expecting to get 50 off it. You know, if you can get through maybe even 24 for 2 to 30 for 2, I reckon you're winning that battle right there up front, and you're actually setting the rest of the innings up. You know, you've ideally got 2 guys in who have batted a couple of overs in that first 6, and then from there, that 7 to 15 becomes vitally important with 8 wickets in hand. You go through that, and if you can get there to the 15 over mark, maximum 4 down, I think you're in a really good spot to utilise those last 5 overs. And it's not necessarily about hitting the ball out of the park, because we know that's been difficult, but it's about hitting gaps and running and just manoeuvring the field around to how you want the bowler to be and where you want the bowler to bowl, which is going to be your strong areas. But Pakistan did start well against India. They did all the hard work and then they collapsed at the back end. How would you rearrange that mindset for the middle order and late order to get the job done after that foundation has been set? Well, it's just as I said, it's not trying to hit the ball out of the park, because no one's actually been able to do that consistently well. There's been a 6 here and there where maybe a spinner's got just a little bit too full and you've been able to step hit down the ground. We saw David Miller bat when he won the game for South Africa, where he had been batted for a long time and was able to pick up the length quick enough to be able to hit over the leg side. But apart from that, I don't think there's been anybody else to be able to do that. They haven't batted long enough, and the wicket doesn't allow you to do that. So you've got to try and skin the cat in a different way. You know,
take away the ego of, oh, it's T20 cricket, I need to hit big sixes. It's not all about that. Have some batsmanship about it. Hit the ball through cover along the ground into a gap where you're running twos. Hit it, knock it to the 30-yard circle on the leg side to the big boundary and run two. Make them have to then come off the boundary, and then you might get a ball to hit, and you can actually beat them on the left because they're trying to cut the angle off. They're too far in and they can't catch up with that ball. You know, it's just slow mind outfield games. is giving the opportunity to run hard singles as well. 100% it is. And as I'm saying, it's all about hitting gaps. You know, it's not about trying to take the fielder on. It's too hard on this wicket. Yeah. You just got to be smart about it and take the ego out of the game a little bit. Soak up the pressure. I would like to add one thing in what Martin said. You know, as a batsman, your technique is always with you. But how you score your runs, basically the tactics you need to improve is a very important thing. Because this ground is not offering you boundaries. So your ability to rotate the strike will be challenged here. Your technique will be challenged here. So I think whoever will hold his technique for a longer period of time and will have a more ability to rotate the strike, taking ones and twos, playing in the gaps, running between the wickets, that will add a lot of value as a player. So I think the whoever as a batsman go inside there should think about how he can rotate the strike on a regular basis. Don't think about hitting sixes, that's what he said, come out of that egoistic approach towards T20, like I have to hit, I have to muscle the ball everywhere out of the park. So this is the ground who requires a little bit more tactics towards rotating the strike. बिल्कुल अगर हम अभी तक you know, if you see the 21 games, Marty, and you know, we assess के we know the conditions haven't been very friendly towards the batters. So in 21 games, just 6.7 runs per over, that's the average in this World Cup so far. But Yunus, I want to quickly ask your opinion, because we're talking about the average per over, we're talking about the difficulty that batters are facing. इस World Cup के अंदर इंटरेस्टिंगली अभी तक सबसे लो स्कोरिंग वर्ल्ड कप रहा है T20 का अक्रॉस हिस्ट्री. सिर्फ अगर आप वो पहला मैच देखें 195 जिसमें यूएस और कनाडा का मैच था, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर गेम्स हैव बीन लो स्कोरिंग एंड चैलेंजिंग फॉर बैटर्स. लेकिन बिकॉज आपने T20 क्रिकेट बिल्कुल 2007 वर्ल्ड कप से आपने एवोल्यूशन देखा इस फॉर्मेट का, क्या रीज़न है? इज दिस द ग्रोथ evolution that you were hoping for कि बैटर्स के लिए अब चैलेंजिंग होता जा रहा है rather than the other way around? नहीं, ऐसा नहीं है. T20 की अगर हम बात कर रहे हैं, लीग्स की बात करें, तो हम हर जगह देख रहे हैं 180 और 200 रन हो रहे हैं. और एक और मैच में भी 200 रन हुए हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में. वहाँ भी 200 रन हुए हैं. ऐसा नहीं है कि 200 रन कहीं नहीं है, 200 रन आज भी हो सकते हैं. लेकिन उसके लिए जो है ना, वो जो ऐसी पिचेस, ऐसी कंडीशन क्या करती है, बार बार आपके नर्व्स को टेस्ट कर रही होती हैं, हर ओवर में टेस्ट कर रही होती है. अच्छा, हमने ये देखा है, चाहे वो बॉलर्स हैं चाहे वो बैटर्स हैं, T20 में आएंगे, जल्दी से 4 ओवर करेंगे, आएंगे जल्दी से 30-35 बॉलें खेलेंगे और 70-80 रन कर देंगे. तो वहाँ पे नर्व्स इतने ज़्यादा टेस्ट, क्योंकि ईजी है ना. अगर मैं दुनिया के क्रिकेटर्स की बात कर लूँ तो लोग क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं? कोई ऐसा प्लेयर देखा आपने जो T20 छोड़ के कहेंगे जी मैं टेस्ट क्रिकेट खेलनी है? ऐसा कोई प्लेयर है? कोई एक आधा होगा मैं खास, बहुत कम. अभी बेन स्टोक्स ने ऐसा किया मेरे ख्याल से, सिवाय बेन स्टोक्स, और उनका भी कमबैक हमने देखा वाइट बॉल में, उनका भी देखा वाइट बॉल में हुआ, या मोइन अली का जिस तरह वो आए थे. तो इजी ऑप्शन है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही आसान है, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि अब हम अपने आप को इतना कौन टेस्ट करेगा. 4 डे खेलेंगे, लंबी क्रिकेट खेलेंगे, जाएँ बस लीग्स खेलेंगे, T20 खेलेंगे, थोड़ा सा ट्रेन करेंगे आप, क्योंकि ट्रेनिंग भी आपकी चेंज हो गई ना. अब जाएंगे जिम में मसल्स बनाएंगे और जाके बस चौके छक्के मारेंगे और तेज़ बॉल करेंगे, वेरिएशंस लाएंगे, तो इजी एक ऑप्शन आ जाता है आपके पास. तो ये है, इजी नहीं है, लेकिन हमने इजी एक सोच की वजह से हमने बना दिया. और फिर जब इस तरह की कंडीशन जब ऑफर होती हैं तो हम कोलैप्स हो जाते हैं. अब हमें, अगर हम अपने बैटर्स की बात करें, 2-3 ऐसे बैटर, नाम नहीं लेते हैं, बड़ा नाम ले लिया उनके, तो उनके लिए तो सूटेबल कंडीशन थी, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं परफॉर्म किया? जब रना बॉल चाहिए थे हमारे बैटर को तो क्यों नहीं किया? वो इसलिए कि वो माइंड सेट चेंज हो गया है, जबकि उनके लिए तो उनके तो गेम ही यही है. इसी तरह बॉलर्स को भी मैं बात कहूँगा कि जब आपको समझ में आ रहा है कि इसको और अच्छा कर सकते हैं और टीम के लिए करना है, लेकिन वो आगे बस बॉल कर रहे हैं और अब ठीक है पिच से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से. लेकिन बार बार कंडीशंस में नर्व चेक हो रहे हैं, ठीक है, आपकी स्किल्स भी चेक हो रही है, आपकी फिटनेस भी चेक हो रही है, लेकिन नर्व भी, क्योंकि 2 पॉइंट है, एक तो पिच है, एक ग्राउंड है, और फिर ऊपर से प्रेशर इतना आ गया क्योंकि पास्ट में आप हारते हुए आ रहे हो. लेकिन अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात करूं तो दोनों मैच तो बहुत क्लोज रहे, बस वो जो है ना पार नहीं कर सके. अगर हम पार कर जाते और ख़ासतौर पे लास्ट मैच में पार कर जाते तो आज हमारा कहाँ स्टैंड करना था. तो मेरे ख्याल से ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान टीम जो है वो मिस कर दिया. और जहाँ मीडिया की बात है ना, देखिए, हम अगर
कुछ प्लेयर्स के लिए बात कर रहे होते या मीडिया उनके लिए बात कर रहे हो, मैं अपने कोलीग्स को ये मतलब शेयर करूँगा, वो इसलिए कि हमारी बात जब थी तो हम इतने मीडिया पे ऑन नहीं थे, तो हम ये नहीं दिखा रहे थे कि मैं आज रूम से बाहर जा रहा हूँ, रूम से अंदर आ रहा हूँ, आज मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ, तो ये नहीं करें। जब आप अपने जाएं, आपने बिल्कुल जाएं, घूमे फिरे, थोड़ी खामोशी हुई हुई है, खामोश रहे ना, खामोश रहे, गेम पे फोकस करें, और खासतौर पे इतने बड़े इवेंट्स में जब आप गेम पे, और फिर ज़रूरत क्या है मीडिया पे आने की इतनी ज़्यादा, आप हर मैच में मैन ऑफ द मैच हो, हर मैच में मैन ऑफ द मैच हो, हर मैच में परफॉर्म करें, हर मैच में अच्छा करें, हर मैच में बॉडी लैंग्वेज अच्छी दिखाएं, तो इतनी मीडिया मौजूद है, आपको कुछ करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सोशल मीडिया से आगे पीछे हो जाए, जो पास्ट में भी ऐसा होता रहा कि जब ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स आते रहे, सोशल मीडिया से बाहर आते रहे, तो इसलिए फिर बात करते कुछ प्लेयर्स की मतलब, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जी अब क्या होगा कुछ दिनों में, अभी एक प्लेयर रोया है आपका मैच के निकलते हुए, थोड़ी देर में उसकी वीडियो आ जाएगी, वो वहाँ बैठ के रो रहा है, वो वहाँ बैठ के रो रहा है, वो वहाँ बैठ के रो रहा है, यहाँ बैठ के रो रहा है, मैं यहाँ रो रहा हूँ, मैं फेमस हूँ। नहीं तो भाई ये रोना वोना का नहीं है, अभी करने का टाइम है ना यार, रोने का टाइम नहीं है, करने का टाइम है। हफीज क्विकली आपकी भी थॉट्स, बिकॉज एवोल्यूशन ऑफ द फॉर्मेट पे आप भी बहुत दफ़ा आपने बात कर चुके हैं कि किस तरह एज अ बैटर आपको भी इवॉल्व करना पड़ा है, बट अभी तक जो ट्रेंड हम इस वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, डू यू थिंक ये एवरेज बेहतर होगी एज वी मूव फॉरवर्ड, एंड ऑफ कोर्स सुपर 8 जब करीब जाएगी? देखिए अभी तक हमने इस टूर्नामेंट के अंदर पिचेस की वजह से आपको थोड़ा मुश्किल हुई है एज ए बैट्समैन, ये नहीं कि उनके इंटेंट ठीक नहीं थे, ये नहीं कि उनकी एबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर पिच आपको रिक्वायर्ड वो ऑप्शन नहीं दे रहा, तो आपने उसके अलावा स्कोर करना। अपार्ट फ्रॉम कपल ऑफ गेम्स हमें बड़े स्कोर नहीं नज़र आए। न्यूयॉर्क में जितने भी मैच हैं हाईएस्ट 137 है जो कि कनाडा ने किया हुआ है, तो हमने देखना ये कि कंडीशन क्या हमें मिल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि जब ये यहाँ से वेस्ट इंडीज़ में शिफ्ट होना ये वाला टूर्नामेंट, तो वेस्ट इंडीज़ की पिचेस पे भी जो स्कोर है 160-70 विनिंग स्कोर बन जाता है, और वहाँ पे भी डिपेंड करता है कि किस वेन्यू पे कितने ज़्यादा मैच हो रहे हैं। तो अगर जितने ज़्यादा मैच होते जाएंगे तो वो भी जो है वो मर जाएगी उसकी पूरा जो सरफस है। तो मुझे ये लगता है कि इस टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो आपको बहुत बड़े बड़े स्कोर नज़र नहीं आएंगे। टीम वो जीतेगी जो सिचुएशन अच्छी हैंडल करेगी और वो जो विनिंग मोमेंट्स ग्रैब करने वाला जो एक आंसर है उसको पकड़ लेगी, क्योंकि अगर आप वो स्मॉल मोमेंट्स कैच नहीं करते तो आप अपनी गेम को अपने से दूर कर देते हैं। पाकिस्तान से भी 2 मैचों में ऐसे ही हुआ, और कुछ और बड़ी टीमें भी ऐसी हैं जो उन मौक़ों को नहीं पकड़ सके या उनको ग्रैब नहीं कर सके एज ए टीम, तो वो उन्होंने अच्छा, लूज़ ये कर 10 सालों से ये मौके तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं, यही तो मसला है शुएब भाई कि पाकिस्तान की हार स्किल से नहीं हुई। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया का मैच देख लें तो पाकिस्तान के प्लेइंग मेंबर के मैचेस T20 ज़्यादा थे इंडिया से, आप उसको काउंट कर लें, ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम थी लेकिन डिलीवर नहीं कर सकी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मेंटल ब्लॉक है। हम कहीं ना कहीं मेंटली उस स्टेज के ऊपर नहीं पहुंच रहे, हम अपनी गेम को उस तरीके से डील नहीं कर रहे, हम स्किल से नहीं हार रहे। पाकिस्तान टीम इज़ नॉट लूजिंग बिकॉज ऑफ द स्किल्स फॉर श्योर, सिर्फ उसका एक मेंटल इशू है जहाँ पे वो एज ए टीम वो मोमेंट्स नहीं वो जीत पा रहे। जैसे यूनुस भाई ने बात की कि रिजवान के लिए वो सूटेबल टेलर मेड कंडीशन थी और वो खेल भी वैसे रहा था, वी वर वेरी हैप्पी, वी वर कंट्रोलिंग द गेम, लेकिन वहाँ पे जो उसने सोचा वो वहाँ की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हालांकि उसने सीधा अपने बल्ले को रख के अपनी जो बारी लंबी लेनी थी, जो यूनुस भाई बात कर रहे थे कि 30 उसने किया था, 15 से 20 रन जोर करता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता, और उसके लिए छक्के मारने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ रोटेशन ऑफ स्ट्राइक इंपॉर्टेंट था। वो उसने मिस किया तो पूरा मैच ख़राब हो गया। मुझे ये लगता है कि जो आपकी वाली बात है कि हमें एज एन इंडिविजुअल अपने रोल को एज ए ट्रू प्रोफेशनल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमने अप्लाई करना है। छक्का सबको मारना आता है। जैसे अब अगर आप बात करें तो जावेद मियादाद साहब जो हमारे ग्रेट प्लेयर हैं, उनका जो छक्का मशहूर हुआ था वो छक्का तो पहले भी मार सकते थे, बट ही केप्ट दैट 6 उस टाइम के लिए उन्होंने बचा के रखा जब ज़रूरत पड़ी। ही टुक दैट गेम टू लॉन्ग, जहाँ पे उनके पूरा उन्होंने अपना वो पोजीशन बनाई जहाँ पे वो डिलीवर कर सके। तो ये एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि छक्का मारना हर एक को आता है, लेकिन किस वक्त वो सिचुएशन आएगी उस वक्त अपनी एप्लीकेशन करनी है। तो लेट्स होप कि मैं इसमें बात ज़रूर ऐड करूँगा। देखिए ऐसा क्यों होता है, अब इसका आंसर ढूंढें कि आपको जब कंडीशन 10 सिंगल ले रहे हैं, सेमीफाइनल फाइनल खेल चुके हो, देखिए क्यों हो रहा है बार? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ रन बॉल चाहिए और मैं खेल रहा हूँ, मैं एक सीनियर प्लेयर हूँ, मुझसे रन बॉल नहीं हो रहे हैं, क्यों? उस सिचुएशन में क्यों ब्लॉक है, ये समझना है। ये समझना इस तरह है, जब आप वही बैटर पावर प्ले में जाएंगे और वो वहाँ रन बॉल खेलेंगे, सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेलेंगे, तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर आप मैं पावर प्ले में गया हूँ, 6 ओवर के लिए गया हूँ, मार्टिन गए, मैं गया हूँ, हफीज़ गए,
तो हमारी इंटेंशंस क्या होगी, 6 ओवर में कितने, 60 रन, 70 रन, यही है ना कि छक्के जैसे ही बैक ऑफ लेंथ बॉल पड़ेगी वो बाउंड्री में, ऑफ स्टंप से बाहर पड़ेगी वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, मुंह पे बॉल गिरेगी तो कहाँ जाएगी, सामने स्क्रीन पे जाएगी। ऐसा ही है, थोड़ा सा हार्ड लेंथ के ऊपर और जाएगा, हाथ खुलेंगे, छक्का होगा। तो जब आप वहाँ ऐसे नहीं खेलते हो तो फिर नीचे आके सिचुएशन में ऑन नहीं होते। तो मेक श्योर करें, मैं किसी एक बात की बैटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब बैटर्स की बात करूँ। इसी तरह बॉलर्स का भी यही है कि जब आप सिचुएशन में, अब आपको सिचुएशन डिमांड ये करती है कि आपने रन्स बचाने हैं और आप जल्दी जब आगे बॉल करें किस तरह मैं आउट कर दूं और वहाँ पे आपको बाउंड्रियाँ लग जाएं, तो क्या होगा, आप सिचुएशन में ऑन नहीं है। तो आपको सिचुएशन में हर हाल में ऑन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो जो रिक्वायरमेंट है उस तरह खेलें तो आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर आप टीम मैन बन जाओगे। सिंपल इज दैट। Plenty of good advice from World Cup winning captain Yunus Khan there. Hopefully Pakistan can take some of that on board, get the job done and keep their hopes of a Super 8 berth alive in this edition of the T20 World Cup. Off to a very short break here at Vantage Developers presents Game on Hair. But my gosh, so much more to discuss on the other side. We'll see you all shortly. Ji, welcome back to Vantage Developers presents Game On Hai. We're building up to Pakistan versus Canada, which is taking place once again in New York. Let's hope New York today has a different result for Pakistan, क्योंकि जो last game पाकिस्तान ने यहाँ New York में खेली against India, उसी के ऊपर हम अभी तक बात कर रहे हैं। शायद अभी तक रिकवरी नहीं हो सकी एज फैंस, बट टीम के पास अब इतना टाइम नहीं है कि वो उसके लिए रिकवरी करे, बिकॉज a do or die match today for Pakistan. So there is no time to sit back and reflect and sort of dwell over whatever happened in that match. नया दिन है, नया डॉन है, नया चैलेंज है और सामने वाली टीम कोई वीक टीम नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस वर्ल्ड कप में ऑलरेडी इस वक्त पॉइंट्स टेबल में वो पाकिस्तान से ऊपर हैं. They're coming into this match off of a win against Ireland on the same ground as well. So there's that. हम ब्रेक से पहले ऑफ कोर्स बात कर रहे थे पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर और बड़े डिफरेंट रोल्स, बड़े डिफरेंट फेजेस ऑफ द गेम में पाकिस्तान का जो फेलियर आप कह लें या इनएबिलिटी टू क्लोज गेम्स, हम उसके बारे में ख़ास तौर पे बात कर रहे थे और बड़े इंटरेस्टिंग हमारे पास स्टैट्स भी हैं. हफीज़, वी ऑल नो पाकिस्तान ऑलवेज हैव दिस डिबेट गोइंग ऑन कि जी बाबर और रिजवान जब ओपन करते हैं दे टेक अप अ लॉट ऑफ ओवर्स, बिकॉज समहाउ उनके माइंड में ये है कि शायद मिडिल ऑर्डर को वो एक्सपीरियंस नहीं है जो उनको है. और फिर कभी लोग ये कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर के पास जब आप उनको नहीं मौका देंगे तो कैसे एक्सपीरियंस उनका बनेगा. तो ये बड़ी एक टू साइडेड डिबेट होती रहती है. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजिंग, मेकिंग अ चेंज इन दैट टॉप ऑर्डर, एंड डू यू थिंक पाकिस्तान के सारे मसले जो हैं वो मिडिल ऑर्डर के ही हैं या ये कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज होना है, स्पेशली ओपनर्स का? देखिए, मिडिल ऑर्डर में बहुत से प्लेयरों को आजमाया गया और जब मैंने और शुएब मलिक ने क्रिकेट छोड़ी तो बहुत से प्लेयर पहले भी खेल रहे थे, फिर उनको बहुत ज़्यादा मौके मिले. हम टॉकिंग अबाउट आसिफ अली, हैदर अली, खुशदिल शाह, उसके बाद इफ्तिखार अहमद ने आकर थोड़ा बहुत अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ किसी न किसी जगह पे वो खड़े हो गए. लेकिन हमारे पास पक्के मिडिल ऑर्डर नहीं थे. इसके साथ हुसैन तलत भी ट्राई किए गए. कुछ नए लड़के जो डोमेस्टिक में मौजूद थे, उसमें कामरान गुलाम थे जो बड़ी परफॉर्मेंस दे रहे थे, उमैर बिन यूसुफ थे जो इमर्जिंग अच्छे प्लेयर हैं जो अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके साथ तैयब ताहिर जो है उनका नाम सामने आया. तो ये 7-8 प्लेयरों में मुख्तलिफ जगहों पे कई लोगों को मौके मिले और 2-3 लड़कों को भी मौका नहीं मिला. हुआ ये कि मिडिल ऑर्डर बहुत मुश्किल प्लेस है T20 में खेलने के लिए. बड़ा बेहतर पोजीशन या आपके पास बड़े स्कोर करने के ज़्यादा चांसेस है जब आप ओपनर या नंबर 3 पे खेलते हैं. और अनफॉर्चुनेटली हमारी सिलेक्शन का रॉन्ग क्राइटेरिया सेट हुआ है कि हम लोग ज़्यादा स्कोर करने वाले को पिक कर लेते हैं. जी डोमेस्टिक का सबसे ज़्यादा स्कोर किसका है, उसको पिक कर लो. वो ये नहीं देखते कि अगर मिडिल ऑर्डर की बारी नहीं आ रही तो हमने देखना ये कि उसका इम्पैक्ट कितना है. तो मिडिल ऑर्डर की बारी इस T20 फॉर्मेट में मोस्ट रन से ना देखी जाए उसकी सिलेक्शन, उसके इम्पैक्ट के साथ उसकी सिलेक्शन की जाती है. तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया ही गलत था.
हुआ ये कि जब मैं पाकिस्तान टीम के साथ 2 महीने के लिए आया तो मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा कि यार बाबर और रिजवान वेरी गुड प्लेयर्स, पाकिस्तान के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, लेकिन बाकी लोग डेवलप नहीं हो पा रहे, बाकी लोगों को उस तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, और हमारे पास कुछ ओपनर्स हैं जो बहुत अच्छे एक्सक्लूसिव वे में क्रिकेट खेल सकते हैं। हमने फ़खर को ऑलरेडी 4 पे ले आए हैं, तो नंबर 3 पे कौन होगा ऐसा जो आ सकता है और एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है ताकि टीम बन जाए। बाबर और रिजवान पूरी टीम नहीं है, वो अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन 2 ओपनर हैं, वो पूरी टीम नहीं है। तो पूरी टीम बनाने के लिए एक सोल्यूशन ये सोचा कि यार क्यों ना रिजवान न ओपनर रहें, क्योंकि वो विकेट कीपिंग भी करते हैं, और एज ए फील्डर भी अगर उनको खेलना पड़ा तो वो भी खेल सकते हैं। और जो पाकिस्तान का मोस्ट अकम्पलिश्ड बैट्समैन है, टेक्निकली सॉलिड है, पिछले 7 साल से वनडे क्रिकेट का वो नंबर 3 पे खेल रहा है, अगर वो नंबर 3 पे आता है तो कोई मसले नहीं है। उसने ऑलरेडी भी T20 में 25 या 28 उसने T20 की इनिंग्सें खेली हुई हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी है, एवरेज भी ज़्यादा है, स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा है। और वो जो मिडिल ऑर्डर का मसला है वो हल इसलिए होता है कि जब नंबर 3 पे बाबर जैसा क्वालिटी प्लेयर आएगा तो वो होल्ड करेगा अपने आप को लंबी देर तक और बाकियों को साथ लेके चलेगा, और हम एक फ्लेयर दे देंगे ओपनर के तौर पर, जो उस वक्त के टाइम के ऊपर हमारे पास साइम अयूब समझ में आया, और उसके साथ 1-2 प्लेयर और जहन में थे, जिसमें 1-2 प्लेयरों के नाम परफॉर्मेंस के साथ हमने देखे कि यार अगर ये परफॉर्म करते हैं तो हम इनको दोबारा चांस दे देंगे, लेकिन इस वक्त हम साइम के साथ जाते हैं। साइम खेले या ABCD कोई भी प्लेयर खेले, वो एक ऐसा प्लेयर था जिसने ओपनर के तौर पर एक्सक्लूसिव क्रिकेट खेल के एक रोल प्ले करना था रिजवान के साथ, तो आपका टॉप 4 सॉर्टेड होता था। 5वें नंबर पे जब मैं था डायरेक्टर तो मैंने अपने सिलेक्टर चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज को बोला कि आप मुझे मिडिल ऑर्डर के 4-5 प्लेयरों को मुझे लगा कि हम इनके बारे में सोच सकते हैं, इनमें से कोई भी 2 प्लेयर जिनको आपकी सिलेक्शन कमेटी बेहतर समझती है वो 2 प्लेयर ऑन टूर मुझे भिजवा दें ताकि मैं उनको खिलाऊं और देखें कि हम उनकी परफॉर्मेंसेस के साथ वो क्या हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसमें हुसैन तल्लत थे, तैयब ताहिर थे, उमैर बिन यूसुफ थे, कामरान गुलाम थे और आजम खान थे। डोमेस्टिक से सारे प्लेयर्स जी, डोमेस्टिक के, क्योंकि मैं पैराशूटर लाने के हक में नहीं था। लोग मुझ पे, मैं इस पे क्लियर करता हूँ बाद में, पहले मैं ये वाला मामला पूरा कर लूँ कि मैंने डोमेस्टिक के प्लेयरों का मैंने बात की कि ये मिडिल ऑर्डर के 5-7 प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, आप इनमें से कोई भी 2 मुझे इस सीरीज़ पे दे दें, T20 सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, और अगर इनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर आती है तो हम इनको कंटिन्यू करेंगे, और अगर नहीं होगी तो जब हम होम सीरीज़ पाकिस्तान में न्यूजीलैंड में आएंगे, जो न्यूजीलैंड ने आना था, तो उसमें हम और लड़कों को भी चांस दे देंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंसेस जो डोमेस्टिक नेशनल T20 में होंगी या PSL में हमें कोई बेहतर टैलेंट नज़र आएगा। हुआ ये कि वहाब ने बोला कि ये 4-5 प्लेयर जिनके आप नाम ले रहे हैं इनमें सिर्फ उनको आज़म समझ में आता है और उनकी सिलेक्शन कमेटी इसके हक में है। अच्छा, ओके, दैट्स फाइन। आज़म को मैंने कॉल की, आई रेज माई हैंड अप, और मैंने कहा आज़म, आपने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना अगर आप चाहते हैं तो आपको 2 काम करने हैं। एक काम ये करना है कि आपको फिजिकली फिट होने की पूरी कोशिश करनी है, जो कि रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और दूसरा आपने जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आपने परफॉर्म करना है पूरा, और आपको मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी कीपिंग भी बहुत ज़्यादा काम करें, क्योंकि जब भी आप आएंगे इस फिटनेस के साथ आप फील्डिंग नहीं कर सकते, आप कीपिंग कर सकते हैं। Fair. आज़म को फ़ोन किया, उसको कनेक्ट कराया पाकिस्तान के ट्रेनर के साथ, ड्रिकिस के साथ, जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ एज ए ट्रेनर काम कर रहे हैं। आज़म के जो ट्रेनर थे उनको कनेक्ट करवा दिया पाकिस्तान के ट्रेनर के साथ, और तमाम प्लान आज़म तक पहुंचा दिए कि आज़म, हम चाहते हैं कि आपका जो भी वेट है, जो भी फैट लेवल है, आई डोंट केयर अबाउट इट, ऑल आई केयर कि आपने इसको नीचे लेके आना, और वो प्लान आपको दे दिया गया, और आपने अपनी रनिंग एबिलिटी बढ़ानी है, बिकॉज आई डोंट केयर कोई मोटा है कोई पतला है, आई रियली डोंट केयर अबाउट इट, ऑल आई केयर कि आपकी रनिंग एबिलिटी ऐड होनी चाहिए ताकि वो गेम को ख़राब ना करें या पूरी टीम के बैलेंस को ख़राब ना करें ड्यूरिंग द गेम। आज़म जब वहाँ पे आता है 6 वीक के प्रोग्राम को देने के बाद, वो उसी वेट पे जहाँ पे वो 6 वीक पहले खड़ा था उसी वेट के साथ वहाँ पे पहुँचता है, उसी तरह के फैट लेवल के साथ वहाँ पे पहुँचता है। रनिंग एबिलिटी बाकी टीम से 2 गुना कम है। अगर बाकी टीम 10 मिनट में 2 किलोमीटर भाग रही है तो वो 20 मिनट में भाग रहा है। तो यहाँ पे मैं उसके पास गया, मैंने कहा आज़म, जब आपको एक पूरा प्लान दिया गया था और आपको मैंने कनेक्ट करवा दिया था तो आपने क्यों नहीं उसके मुताबिक अपने रोल प्ले किया? तो वो उसके पास जवाब नहीं था कि जी मैंने पूरी कोशिश की, नहीं हो सका। टू मी दिस इज़ अनप्रोफेशनलिज्म। फिर उनको मौका मिला, 3 मैचेस खिलाए गए। आई फाउंड दैट दिस गाय इज़ नॉट मेंटली रेडी टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। मैंने फिर भी उनको समझाया कि देखिए आज़म, आप यहाँ पे आए हैं, आपको मज़ीद जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स प्लेइंग पाकिस्तान दिखानी पड़ेगी। वो मुझे नज़र नहीं आई। मैंने 3 मैचेस के बाद उनको रेस्ट करवाया
और मैंने अपने सिलेक्टर्स को बताया कि मुझे ये फाइंडिंग्स हुई हैं इसके बारे में, अब आपने फैसला लेना है कि उसको मूविंग फॉरवर्ड आपने खिलाना है। आपने नोटिफाई किया सब चीज़ें, पूरी रिपोर्ट मैंने उनको बना के दी। बुलाने का भी राइट तरीका था और ना होने के बाद भी उनको बताया गया कि आपने इसके ऊपर काम करना है। इसी के साथ अब वो परफॉर्म नहीं करता तो दूसरे मिडिल ऑर्डर को ट्राई आउट करना है। अब अगर एक बंदे को प्लान दिया जाए, कनेक्ट करवाया जाए, 6 वीक पहले बताया जाए कि आपने हर महीने 5 से 7 किलो कम करना है। अगर एक बंदा ना, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने 20 किलो एक महीने में ख़त्म कर देना है, 5 से 7 केजी तो इस वेट के साथ आप नीचे ला सकते हैं ना, लेकिन उसने उसकी मेहनत नहीं की, उसके लिए उसने कोशिश नहीं की। अब एक चीज़ नज़र आ गई, मैंने सिलेक्टर्स को बता दिया, फैसला उन्होंने लेना है। दूसरी एक चीज़ मुझ पर अक्सर बात की जाती है, जी मैंने मोहम्मद आमिर को कॉल की, आई रेज माई हैंड अप, मैंने मोहम्मद आमिर को कॉल की। क्योंकि वो मुख्तलिफ पिछले 4 सालों में चैनल्स पे बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ कुछ गलत बातें कर रहे थे कि मुझे सही तरह यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा, मुझे मैनेजमेंट सही मौका नहीं दे रही। मैंने उनको ये कॉल की कि अगर आप वाकई पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, आप पाकिस्तान की क्रिकेट की डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस जाएँ, वहाँ जाके परफॉर्म करें। जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको अगर सिलेक्टर सिलेक्ट करते हैं तो आई विल ऑफर यू इक्वल अपॉर्चुनिटी। आपके साथ अगर पहले किसी मैनेजमेंट ने कोई ज्यादती की हुई है, अब नहीं होगा। मैसेज क्या था? क्लियर मैसेज के डोमेस्टिक खेलें, पहले डोमेस्टिक खेलें। ये पहले बात हुई है कि आप डोमेस्टिक खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, फिर सिलेक्टर अगर सिलेक्ट करेंगे, जब आप सिलेक्ट होकर आ जाएंगे यहाँ पे आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि आपका हमेशा से रहा है गिला, वो नहीं होगा। वो मुझे ये कहते हैं कि ही डज नॉट वांट टू प्ले पाकिस्तान, ही इज़ हैप्पी वेयर एवर ही इज़, ही मूव्ड ऑन हिज लाइफ विच इज़ फाइन। ये उसका एक अपना फैसला है, हम उसके आगे चले गए। लेकिन इन सारे सिनेरियोज के अंदर अगर एक प्लेयर परफॉर्म नहीं करता या 4-5 महीने बाद अपना इरादा बदल देता, अलॉन्ग विद इमाद वसीम ऑल्सो, इमाद को भी इसी तरह की कॉल गई थी, लेकिन उसने भी कहा कि जी वो इंटरनेशनल लीग खेलना चाहता है। तो जब वो प्लेयर जो 4 महीने पहले पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने के लिए रेडी नहीं थे, उनके क्योंकि उस वक्त लीग में कॉन्ट्रैक्ट थे, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया। आज क्योंकि इंटरनेशनल लीग नहीं हो रही कहीं पे भी, तो उन्होंने वर्ल्ड कप खेल लिया। तो ये वो इश्यूज़ हैं जो समझने की ज़रूरत है कि कहीं पे भी प्रोसेस गलत नहीं था, लेकिन अगर कोई इसको मिसयूज़ कर रहा है तो ही शुड बी अकाउंटेबल। That's a good point, because of course the leagues really have been going on in the lives of some of the cricketers, and as Hafiz pointed out that Imad Wasim and Mohammad Amir had not been part of the domestic setup. So interesting debate that, but of course a huge responsibility on their shoulders, because of course they bring in that experience with them. And they're players that play a lot in these conditions as well. Should they get all the way to the Caribbean, that's going to come in handy, that knowledge of those wickets. But if we're talking about an underperforming middle order, a certain name springs to mind in Iftikhar Ahmed. I mean, he's got so much promise. We've seen how damaging he can be in franchise cricket, I'd have to say. He can be very damaging at finishing innings with the bat. And we've got a graphic here which sort of talks about the curious tale of Iftikhar Ahmed. And looking at these numbers here, Guppy, when you strike at 148 at a decent average, if you're coming in roughly between the 11th to the 15th, would you be tempted to have him as a bit of a floater within the playing 11, particularly in these difficult conditions, and go, right, mate, you've got 15, 20 balls, just go nuts, and what can you bring us? And he could really break the back of a run chase or put the bowlers under pressure, and then should conditions lead to it, then you carry on with the rest of your batting order. But what do you think about how he's been performing based on the wonderful potential that we've seen him to have in the PSL, for example? Yeah, I think he is actually one of the only Pakistani batters who actually has the strength and the raw power to consistently hit sixes. I think if you look at the other batters in the lineup, they're all a lot smaller guys and rely on technique and timing and ball placement to get their boundaries and runs. But Ifti, he's a big guy, he's strong. We know he can hit the sixes. It could be a case of that, chucking him up the order and say, hey, have a bit of a go, especially on this wicket in New York, and just to see what happens. He strikes at 148.8. That's going at a good clip. In middle overs, and we keep banging on about how important middle overs are to keep the impetus going with the run scoring. Yeah, middle order means middle order. Yeah, not like like 2 or 3 hour lower order. Lower order. Yeah. And I mean, when you talk about the curious case of him, I wonder how much of it comes down to role clarity and if he actually understands what he's being asked to do. It can be a little bit confusing when you're coming in at different times in the innings and you're not quite sure how to go about it. You come in different situations. The team's 4 down early, you're going in, you're not sure what to do. You're coming in with 2 overs to go and you've got to try and hit the ball from ball 1. It's quite tough to
at times understand and how to go about it. But I think he's been around long enough now. I think he's played a lot of cricket for Pakistan in T20. So I think time is now for him to start putting some bigger numbers on the board, and let's hope it starts today for FD. I mean, Pakistan need him. I think it's situational. I think if they get off to a really, really good start and there's a good partnership, or a good partnership through the middle up to just after 10 overs, I think then you can go, FD, go on, have a go. Right, he really has, you know, come through for Pakistan with the bat in situations where Pakistan have been in trouble, and of course with the ball as well. He has come in handy, especially in those games where Pakistan had that spinner problem. We saw in the last World Cup, we saw Iftikhar bowling those 10 overs, so a proper utility player. But Shoaib, the main problem right now for Pakistan, especially when it comes to multi-nation tournaments, चाहे वो ICC World Cups हो, चाहे वो Asia Cup हो, is Babar Azam's form, a sudden dip in his form when it comes to these high pressure tournaments. What would you attribute that to? क्या वजह है कि वो ओवरऑल T20s में उनका रिकॉर्ड अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही हम वर्ल्ड कप्स में जाते हैं या किसी भी टूर्नामेंट में जाते हैं तो कैप्टनसी के साथ साथ ना उनकी बैटिंग भी थोड़ी सी अप एंड डाउन जा रही होती है. आपके स्क्रीन पे ये स्टैट्स भी हैं, दैट डिप इन स्ट्राइक रेट स्पेशली, ये काफ़ी कंसर्निंग होता है. क्या वजह है? देखिए, अब बैट्समैन के बारे में बता सकते हैं. आई थिंक हफीज़ कैन एलैबोरेट दैट ऑन दिस वन, बिकॉज मुझे इतना बैटिंग के बारे में पता नहीं है. बट यू नो, एज अ लेमैन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बाबर का नंबर 1 डाउन ही बनता है. अगर एक स्लॉट खाली छोड़ दिया जाता साइम के लिए, या शायद मेरा ख्याल था कि ज़्यादती थी फ़खर के साथ. फ़खर एज ओपनर आपको बहुत अच्छा स्टार्ट दे सकता था. इसी विकेट के ऊपर ही वो वाई चला के वो काम निकाल देता. ये वाइट वाले विकेट था. ऋषभ पंत क्या कर रहा था, कभी इधर गिरा कभी उधर गिरा कभी ये कर. बाबर का देखें, ऑनेस्टली उसको बहुत सारी चीज़ें अब देखनी पड़ेंगी. बट द थिंग इज टुडे, आज का मैच तो निकाले ना, और अगला मैच निकाले, बिकॉज फ्यूचर लुक वेरी अनसर्टन. चेयरमैन साहब इज he seems to be a very nice guy, but he's a very strict guy, and when he comes to taking decisions, so there is going to be a lot depend on Babar now, because he needs to understand one thing, that whatever the requirement is उसके मुताबिक करना पड़ेगा. अपनी मर्जी नहीं चलेगी. Either as a strike rate, either as a captaincy, either as a anything else. So वैसे नहीं चलेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा फीलिंग हर्ट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा सेटबैक हो चुका है. यू नो, दिस इज़ नो कोई फॉर्मर PCB चेयरमैन जो आपको ऑल आउट सारा इख्तियारात दे देगा और कोच भी आपसे डरेगा. इस दफ़ा आइंदा ये होने वाला नहीं है. सो आई थिंक बाबर का असल पोटेंशियल मुझे लगता है नंबर 4 पे निकलेगा. टेस्ट मैचेस में निकल सकता है, वनडे में 1 डाउन पे निकल सकता है, या एक नंबर एक सेट है उनका 1 डाउन, ठीक है, उस पर आ जाएँ. वंस ही, मुझे लगता है कैप्टनसी बहुत ज़्यादा एक प्रेशर वाला काम है. यूनुस ने की हुई है. यूनुस तो मतलब आधा दिमाग इसका खाली हो गया था. लिटरली लोगों को समझाने के लिए लाउड स्पीकर रखा हुआ था, आपको पता है ना? मैं सही कह रहा हूँ. और ये कह रहे हैं शोएब भाई, मेरे 2014 का वर्ल्ड कप में जब मैं कप्तान बन के गया, यही प्रेशर मैंने फील किया था कि मैं 2014 में बुरी तरीन परफॉर्मेंस दी, और उसकी वजह ये नहीं थी कि मेरे स्किल कम हो गए थे. आई वाज अंडर सो मच प्रेशर, क्योंकि मुझे कोई वो जो सराउंडिंग की सपोर्ट है ना मेरी मैनेजमेंट की, वो नहीं मिल रही थी. तो आई वाज फीलिंग माई सेल्फ आई एम अ लोन पर्सन, और मेरे मुश्किल हालात में, मेरे बुरे फेलियर में भी मेरे इर्द गिर्द कोई नजर नहीं आ रहा. ये वही वर्ल्ड कप है जब आपकी कप्तानी छोड़ दी. उसके बाद आके मैंने कप्तानी छोड़ दी. आई बीन फोर्स्ड टू डू मेनी अदर थिंग्स. आई सेड नहीं, मैं मेरा ये ख्याल है यार कि मेरा अपना जाती राय है कि बाबर अपने करियर पे फोकस करे और परफॉर्मेंसेस पे फोकस करे. और जब उस पर प्रेशर पड़ेगा कि यार ये मैच ख़त्म करके देना, तुमने ये मैच मुका के आना है, टेस्ट मैच मुका के आने हैं, ये दगड़े 10 जो तुम्हारे होंगे वो चेस में होंगे, वो तुम्हारे मैच विनिंग होंगे. वो मुकाबला, वो चैलेंज उसने अपने आप को देना है, हमने नहीं. यार हम यहाँ थोड़ी बैठे हैं, हम बच्चों को जाकर क्रिटिसाइज़ करेंगे यार. मैं इसलिए थोड़ा ही बैठा हूँ, हमारे बच्चों की तरह हैं यार, ये हमें देख के बड़े हुए हैं. तो मैं ये चाहता हूँ यार कि इस पर एक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए. कैप्टन इज बिट टू मच फॉर, कैप्टनसी इज बिट टू मच फॉर हिम. अभी ऑनेस्ट विद यू, कितने वर्ल्ड कप, कितने सेमीफाइनल अंडर हिज कैप्टनसी खेल चुके हैं? 4th वर्ल्ड कप. क्या रिजल्ट? नो ट्रॉफी टू शो, बट यकीन करो, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी अदर प्लेयर, दे आर नॉट द हाफ अ टैलेंट व्हाट पाकिस्तान यूज्ड टू हैव.
No disrespect. I mean, you won't find anybody like Wasim Akram anymore. No, no, you can't find Zaklan. I'm sorry. Razak, Afridi, you know, you can't find this sort of Said Anwar. You know, they're lucky. They're born in India. No disrespect to them. But the thing is, but you have to cater what is needs. You have to do what is required. आपकी मर्जी से नहीं होगा अब ये. अगर ये आप ऐसे चलाना चाहोगे बिकॉज आप पे बहुत प्रेशर पड़ जाएगा तो आई थिंक इस बाबर के अपने के लिए मैं उसको सजेस्ट यही करूंगा. मेरे भी एक सवाल है जी आप हफीज भाई आप पहले बात करो. मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने हाँ. कप्तानी की हुई है, यूनुस भाई ने की हुई है और आपने भी अपनी कैरियर के किसी स्टेज पे कप्तानी जरूर की होगी. आप कप्तान अपनी मर्जी से बनते हैं या पाकिस्तान लेवल पे आपको कौन बनाता है? यूनुस भाई आपको किसने बनाया? आपने खुद चाहा था कि मुझे कप्तान बना दें? बिल्कुल नहीं, अब वो आपको आपके मुझे कप्तान बनाया मेरे चेयरमैन ने. उस वक्त के जो चेयरमैन थे ही थॉट दैट आई एम अ राइट पर्सन टू लीड द टीम और आपको भी कप्तान बनाया आपके चेयरमैन ने. आई हैव अ क्वेश्चन जी. व्हाट इज पाकिस्तान प्रॉब्लम बैटिंग में? कौन सा फेज है आप बताएं. मिडिल ऑर्डर. यही अब हम फिगर आउट करें प्रॉब्लम ऊपर है कि we are struggling in the middle order. Okay. Who is our best players? Babar Azam and Rizwan. Fakhar Zaman and Okay. Rizwan. Go back. When Babar Azam and Mohammad Rizwan start their career in Test cricket, in one day, in T20, which position they were played at that time? 1 down, 2 No, down. no. In domestic. In domestic. Mohammad Rizwan batted at number 5. Number 5. Babar Azam. In a First one day he bat like number 5 or number 6. I was playing at that time. So he started in the middle overs. Yeah. So what teams do in this situation? You fix that, no? Sometimes you struggle, you know, if you are top order struggle, then they request me, you know, when I was playing at number 6, Bob Woolmer came to me and say, brother, in Australia, you remember? Yeah, I remember that. Brother, you have a good technique. So play 1 down. Play 1 down. Are you ready for that? Because you have the ability to, and it was better for the team if you So why dropped not? down My one. question is very simple. Okay. Why not Babar Azam or Rizwan? They come bat on number 5 or number 6. Why not? Yeah. Why Ifti? Yeah. Why why Fakhar Azam or Fakhar Zaman? Why? You know, Fakhar Zaman can open the bat with Saim Ayub, then Usman, then Babar Azam, then Mohammad Rizwan, then Iftikhar. Look, all problems solved. It's a very interesting Why point you not? just make. So we actually have a They stat start here. their career like a middle order batters. Yeah. Well, So why not? I want to bring this to your attention as well. It's not pleasing them. It's pleasing the team problems. Yeah. So why not? It's very simple. Rizwan versus the top 9 teams in T20s. We've got a graphic here. It actually shows that only 3 of them he manages to score at a strike rate of over 130. So yes, he's consistent and he puts runs on the board, but if you're striking at only 130 above 3 of those teams that you can see on there, perhaps maybe a move to the middle order Why would not? serve people better. This is for team, not for myself. You know, I was start my career as a middle order batsman, and then suddenly I bat number 3 because team needed you. Teams need that skill from me, that performance from me. They know if I bat through that 5-6 hours, I make a big hundreds. Why Fakhar Azam came down number 4, number 5? Why? So because he start his career like an opener batter, so you can just go in the right position. So that is the problem. So why not? Where would you like to bat Fakhar Zaman? Opener. Opener. Simple. Yeah. He's been opening the batsman for the last 6 years. Look, it's as simple as that. Marty will tell you as a batsman, these are 3 batsmen sitting there. They know much about the batting. I'm just giving an opinion. It's much easier to score runs within circle. You can do 30, 40, it's easy. But when you come in number 4 or 1 down, you tend to finish the game. And you have to take a lot of pressure on yourself and to finish the game. It's not an easy place to be in. So the safest spot, you know what it is? Yeah. As an opener. Let's not forget as well that and you want to I remember when in the first game when
Gupti said that maybe I just go with one player, maybe Babar Azam or Mohammad Rizwan. Yes. One is out from my team. Why Why is Babar that? in Why is the that? 11? Go on. Why Explain is that. No, that was good. Yeah. Very Why good is point. that? We are not against him. We are not against Babar. We are not against Rizwan. At all. Why did But you say that? That was for the team. I just felt Saeem Ayub and one of Yeah. Babar or Rizwan. Rizwan should be opening the batting. I think Saeem Ayub is a special player. He can actually create a strike rate, get things going. I think Babar and Rizwan are very much the same player. They rely on shot placement. They don't have the out-and-out power that some other players do. Yeah. And then I had a pretty strong middle order. But on the Faka thing, I think he should be batting higher up. Yes. Just let's remember, he's got an ODI double 100. Yeah. Yes. The only Pakistani to have that. Yes. He has raw power. He has the ability to win games Yes. from the top. I know talking to Hafiz, he wanted to bat slightly down the order for the team, but in my opinion, he should be somewhere up near the top. You know, have a right-left combination. Then you have Saeem Ayub somewhere around there as well. A couple of really, really special players that can actually take a game away from a team very, very so quickly. top 4, you wanted top 4 to be loaded. Yeah, I You think want to instill fear, right, don't you, at top 100%. order? You want, yes, there's someone who can work the ball and you know will be difficult for other measures because they're hard to get out, but you want someone going, oh my gosh, he's going to come out here a strike rate of 160 if I'm not careful. And do you feel like maybe that's lacking at the moment with the current opening partnership? Yeah, but I also think that you need your best players facing as many balls as possible. You know, you don't want your best players coming in and only having X amount of balls to go. The first game I played for Pakistan in 2006 as a T20 batter, my strike rate was 103, 104, and I was so happy to perform with the strike rate of 103, and that was a requirement that time. When I left my Pakistan, playing for Pakistan cricket, my strike rate of that year was more than 150, more than 145, because that was a requirement of that time. So you evolve yourself accordingly. Whatever situation and the game asks you to perform accordingly, you have to go accordingly. So I think someone has to understand you have to evolve according to the game. And no one's immune to that criticism. We know Virat Kohli has copped a lot of that recent times. He's innovated, he's really improved his strike rate personally. So it's a conversation that happens with openers all around the world about having to innovate as our game evolves, and T20 cricket has evolved into an absolute beast where even somebody like Rohit Sharma, who had to take a lot of heat from Indian fans in the initial years of his career, when people used to call him Maggie Man, right? Because he would just come in for 2 minutes, and he had that risk-taking ability, and because of that, he endured so much. But he had that backing, and now when he comes, you know, he similar just doesn't criticism take you can talk about our captain, New Zealand captain Williamson, Kane Williams, because he's also holds a lot of ball. He also give himself a lot of time, which sometimes basically takes the game momentum away from the New Zealand team. So not only some of the players of subcontinent, Virat or Babar, are receiving that criticism. Kane must be, you know, going through with a lot of these things. So if you can add something on it. He has been labelled as one of those players as well, but having watched him evolve as a player, he's also learnt to pick up these new shots, you know, picked up the lap shot and things like that. He's actually brought in reverse sweepers and things as well, and he uses his natural timing and ability to also hit gaps everywhere else, playing conventional shots. I know he has worked on his power game. You know, it's not up there with some of the best, but he has worked on it, and obviously we have small boundaries back home in New Zealand, so it probably helps him out a little bit more. And I think moving forward in this tournament, he needs to start scoring some runs for New Zealand to start going forward, because he is the glue of that batting order. And when he's scoring runs, New Zealand tend to. And what number he start bats? winning. He bats 3. Thank you. and plenty of conventional And why did cricket. he wants to improve? Why did he want to improve? He was such an accomplished batsman. No, in Why does he T20 want to format, improve his strike rate was for the always team? For the team. Exactly. That's what I'm gonna. Why? That is the only question. देखिए मेरा ये मैं इसमें ऐड जरूर करूंगा. देखिए ये please. पाकिस्तान टीम वाई टीम है जिसमें से नॉर्मल हम देखते हैं कि यहाँ से मिडिल ऑर्डर से ऊपर जा रहे होते हैं और ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं. ये आप किसको प्लीज कर रहे हैं? हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर हम ये बात कर रहे हैं कि फ़खर जमान ने आके वो शॉट खेला, तो वो उसका स्टाइल अब चेंज उसने कर लिया है. उसकी वजह ये कि वो क्या करे, वो जब आएंगे और 8 7 8 और रह जाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं. इफ्तिखार की हम बात कर रहे हैं कि उसको बिठा दो, उसको खिला दो, उसको ये कर दो, वो उसने मैच हमने जीत के नहीं दिया. तो जब इफ्तिखार आएंगे और 10-12 बॉलें खेलेंगे, वही जो हम यहाँ बात करते हैं, वो क्या कर सकते हैं. यार चले बाजू का हो जाता है ऐसा, लेकिन कभी तो उनको मौका दो
कि वो भी फॉर्म में है। कभी तो फ़खर जमान को कहेंगे जी आप जाएं और आज अपना जो आपका गेम जो सिनेरियो आपके लिए सेट है उसको वो दे दें। इफ्तिखार के लिए भी कभी तो उसको 10-12 ओवर दे दें, कभी कभी दे दें, ताकि वो फॉर्म में तो रहे, ताकि वो उसकी फॉर्म तो लगी रहे। अगर इसी तरह वो 4, 5, 6, 8, 10 बॉलर के लिए आएंगे और वो नहीं करेंगे तो अंडर प्रेशर और बहुत जल्द लग रहा है कि वो टीम से ड्रॉप हो जाएंगे। फ़खर जमान भी टीम से ड्रॉप हो जाएंगे, इफ्तिखार भी टीम से ड्रॉप हो जाएंगे। तो फिर और ये साइकिल जो है ये कभी खत्म नहीं होगा। I need a little refill on my coffee, I think. Absolutely. So does everyone. I think it's time we headed off to a little breather here. Plenty of action obviously happening with our wonderful expert panel. You're going to want to hear what we have to say on the other side of the break, though, of course, building up to Pakistan taking on Canada. That's Vantage Developers presents Game on Hair. See you in a few moments. Welcome back to Vantage Developers presents Game On है. We're building up to Pakistan versus Canada. कुछ ही देर में हम आपको टॉस, pitch report, playing 11, all the live visuals from New York. We will be sharing them with you as they come. But live action के लिए थोड़ा सा टाइम ही रह गया है, तो build up जो है वो थोड़ा सा इंटेंस और हो रहा है, because अब सवाल ये भी आ रहे हैं कि क्या 11 पाकिस्तान आज खिलाएगी, क्या कोई चेंज होगा। हमने ब्रेक से पहले काफ़ी बात की बैटिंग के ऊपर. We talked about some of the problem areas, or at least tried to figure out what the problem areas are. So far the consensus has been that of course there needs to be a change in that top order, especially with Babar Azam's number. Can we see that change in today's match or maybe moving forward after the World Cup? Well, only time will tell. But right now, we've got the fastest bowler in the world on our panel. Let's talk to him about Pakistan's bowling, because जितना अभी तक इस वर्ल्ड कप में हमने देखा है शोएब, 2 मैचेस में क्या पॉजिटिव टेक अवेज रहे हैं पाकिस्तान के बॉलिंग में? क्योंकि बैटिंग में तो हमने देखा काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं. बैटिंग बॉलिंग थोड़ी आपको लगता है पॉजिटिव है इस वक्त, स्पेशली नसीम शाह का वो लास्ट स्पेल जो हमने पिछले मैच में देखा? बॉलिंग का उस्ताद हमारे पास बैठा है, यूनुस खान. ठीक है ना, हफीज भाई. और कह रहा था कि बुमराह हमारा, नसीम शाह उनका, बुमराह डेंजरस होंगे. ये तो फेवर में था यूनुस के, कुलदीप को भी खिलाएं यहाँ पे, कुलदीप तो फंसा लेता. फास्ट बॉलिंग, all you need to do is hit the right area on this pitch, that's all. हारिस रऊफ हर विकेट पे तेज़ नहीं करनी बॉल. कई विकेटें ऐसी हैं जो आपको इजाज़त देती हैं कि आप लेंथ बॉल कर लो, वहाँ पे अटक जाएगा, बॉल क्रॉस सीम से कर लो, वो आ ही नहीं रहा बल्ले पे, तो वहाँ वो तेज़ करने की कोशिश कर रहा है. तेज़ करने का टाइम होता है, कुछ बॉलें होती हैं. सो आई थिंक नसीम शाह, ही अंडरस्टैंड्स, यू नो, hitting the right areas, asking the right questions, and he gets that rewards. Similarly, Amir is very experienced. He knew that too. You know, कि उसका कैच अगर ड्रॉप ना होता उसके, तो he would have taken more wickets. I think the pick of the fast bowler is Naseem Shah. This very, very encouraging side that he looks fit. You know, he's bowling in the right areas. At the same time, Pakistan bowling done their jobs. It was, you cannot say that, you know, the Pakistan pace battery did not deliver or perform. So I was very happy to see that, you know, with the variation. I would like to see more in those sort of tracks. कि अच्छा लगता है मुझे कि जब बॉल फंस रहे ना, ज़्यादा आप पंगे नहीं करने हैं, आपने वेरिएशन के साथ जाना है, क्योंकि this kind of cricket demands this sort of thing. So I think it's really important that, you know, you keep the spirit up and keep bowling in the right areas. Please do not bend your back in. Just put it in the length area जहाँ पे बैट्समैन को ट्रबल हो रही है. हिट तो यहाँ लग नहीं रही. I hope it's a better track, Aaron. I really hope that is a well rolled down track and a ball comes to the bat nicely. And then again we're able to see some kind of about 150 score, if not possible 130 above kind of score, and needs to be chased down by either of the team. It'll be good, but it's again I would reckon that it's a bowling paradise because batsmen are not able to hit the shot because ball is not coming on the bat so easily. Yeah. So Naseem Shah, pick up the fast bowler. I think Naseem Shah should have come up on top of the order in the batting lineup too.
How's that? Sorry. One vote. I mean, 10 off 4 balls. He almost got the job done. We all thought, can it happen again? 2 sixes in a row. And we've seen his batting Winning the matches for us. against Afghanistan. We remember what he did in that Asia Cup. Twice. So, twice, not even once. So and he was innovating on a difficult wicket, which is what we were crying out for from the batters right the way throughout the Pakistan order. And I'll come to Captain Yunus now because we talk about the importance of the spinners in this format of the game and, of course, in these conditions. How are you feeling about the spinners doing their work through the Pakistan lineup? We saw Ahmad Wasim came back from injury in that second game. He looked good with the ball. He did restrict them a bit, but, you know, what do we need from Shadab Khan as well down the other end to put that pressure on in the middle overs? I think we need more wickets from them. Maybe it is the right time to move to Ibrar Ahmed. Why not? Mystery bowler is there, and the pitch offer, you know. Instead of Shadab? Yeah, not instead of Shadab, but somehow I don't know how they can explain now. Sneak an extra one on the field. किसको drop करे? कर दे. You know, मेरे ख्याल से Shadab as a batter. Exactly. I mean, For me, the problem is Shadab is as a batter नहीं खेलता. क्या? नहीं खेलता. मसला ये है कि टीम ही ऐसी बनी हुई है कि उसमें फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नहीं है. अगर 4 फास्ट बॉलर खेलते हैं तो आप एक जेन्युइन स्पिनर अगर शादाब खेल रहा है तो अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहा तो वो उसकी समझ नहीं आ रही. नहीं लेकिन तो आप अगर देखें, we all would like to see Abrar should play. We all wanted to see that Abrar should play on these tracks. But if they will go with Abrar, they have to miss out one of the fast bowler. And so far we've seen on this track, fast bowlers are doing well, and in the last game too, they did well. You think Haris fast bowler तो नहीं बनते. Fast bowler तो देखिए आपको इस पिच पे 4 ही खिलाने हैं. तो somehow क्योंकि आपके पास अब वो नहीं है. लग्जरी नहीं है हमारे पास. और इमाद अगर आपके साथ खेल रहा है तो फिर देखिए इमाद और शादाब जो हैं वो ठीक है, बॉलिंग अच्छी भी करते होंगे लेकिन आउट नहीं करते. और ये मैं सही बता रहा हूँ, हमारे खिलाफ पिछला मैच में इंडिया ने ये जो एक लग्जरी तो मिस की थी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे ऑलराउंडर खिला दिए और जब सेंटर बीच में आए, ठीक है उनके पास हार्दिक पांड्या मौजूद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुलदीप यादव वगैरह होते हैं वहाँ पे. मैं सही बता रहा हूँ, कुलदीप यादव ने हमेशा हमारे खिलाफ आउट किया और इस पिच पे कुलदीप यादव होते तो और हमें ट्रबल होना था. This point actually really applies well to the Canadian team because they're very all-rounder heavy. If you see their lineup, all of their bowlers can bat, and that gives them that depth and that edge that can be really tricky for Pakistan. लेकिन रोहा ये नहीं करे ना. अब आप एक समझे बात को, अगर हम ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं तो ऑलराउंडर का प्राइमरी जॉब क्या है भाई? एक होता है बॉलिंग ऑलराउंडर, एक होता है बैटिंग ऑलराउंडर. पहले तो ये एस्टैब्लिश करें ना. अब आप मुझे बताएं कि इमाद वसीम बॉलर ऑलराउंडर हैं या बैटिंग ऑलराउंडर. शुएब भाई बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे. शादाब जो है बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो ये तो समझाए ना. बॉलिंग ऑलराउंडर ही हैं, बट वो ये है कि we aren't getting that contribution from Shadab with the ball, and that's all that the problem area is right now in the middle overs. अगर आप बैटिंग के लिए जा रहे हैं कि बैटिंग को और ज़्यादा लंबी कर लें तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता. फिर आप यही कर रहे हैं कि आप उसको भी इफ्तिखार को भी बाहर कर दें और फ़खर जमान को भी बाहर कर दें, ठीक है, और फिर ये इब्रार को भी खिला लें, इमाद वसीम को भी खिला लें, नसीम को बैट दे देंगे. नसीम तो ऐसे ही वो बैट करे. लेकिन आप मुझे बताएं कि पहले मैच अगर मैं बॉलिंग ही की बात करूँ या तो अच्छी कंडीशन है तो पहले मैच में क्या हुआ? वो हम मैच कैसे आ रहे थे? वहाँ क्या बॉलिंग ने वैसे डिलीवर किया था? थोड़ा सा एंड में जाके पुल बैक किया था यूएसए को, लेकिन वही है कि एक दिन में मैं फिर ये बार बात कर रहा हूँ कि ये इट्स नॉट अबाउट कि बॉलिंग अच्छी कर रही है, बैटिंग अच्छी कर रही है. ये नहीं हो सकता. आपको तीनों शोबे, बल्कि चारों शोबे, कैप्टनसी भी है इसमें. कैप्टनसी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें T20 में. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट बैटिंग, द बॉलिंग, ऑपोजिशन फील्डिंग एंड कैप्टनसी. a little bit because of course you can't understate how great they've been in New York. No, you can't. And I think Canada's been a much more worthy an opponent than anybody expected. These are more familiar conditions for them, obviously, hailing from, you know, the Americas. They know kind of roughly what they're dealing with, and you know they put in a wonderful performance against the USA. They only just went down to them. They beat Ireland, which no one ever anticipated that they do, and it's off the back of some wonderful performances with the bat too. Guppy, I'll come to you on one man, Nicholas Curtin. Bayesian born, 26 years old. They'll be ruining the day the West Indies that perhaps they let this one go. Because look at him here. He sits in equal fifth for the most runs in this ICC T20 World Cup. Wow. He had 51
against the USA. They went down in that game narrowly. Player of the match performance 49 in Canada on this same wickets against Ireland, I must say. What have you liked about the way he's gone about his game? He's shown he's got the temperament, the personality and the class to stick it with the big boys. He's striking 151 as well. Yeah, I like the freedom that he's playing with. He's not overawed by the situation which he's being sent in. He's come in a couple of different situations here. 2 for 66 off 8 overs in the last game. A little bit lower than what he came in against the USA, where he came in and was able to play really freely because they had such a great start. But you're seeing here, he moved his feet nicely against Ireland and was just able to access different areas of the ground where there were no fielders. And you know, when he got a bad ball, he put it away. You know, he's, as I said, it's the freedom that he's playing with, and just the clarity in his role, I think, is massive as well. He's not able to be bogged down at the moment, which is really key on these sticky wickets, where if you do, you know, you actually get a little frustrated with yourself and you go away from what you do best. But you know, he's just sticking to a simple game plan. He's watching the ball really clearly. He must be seeing everything in slow motion at the moment, because it just looks easy for him at the minute. Today's going to be a really big test for him. But it's not only him in the batting, it's also Johnson at the top as well. You know, 2 massive players for Canada. Massive test today, though, against such an established bowling unit like Pakistan, though. And if he can get another performance like he has done in these last couple of games, you know, he's putting himself up there as a world-class player. Not at all overawed by the big stage, but Pakistan is another ball game altogether. Roha. Well, we can't wait for all the action to unpack, because the analysis so far has been top-notch. But let's bring in our viewers. आपको engage थोड़ा सा हमने करना है, because हम हर show में आपके लिए इतने ज़बरदस्त surprises, prizes, packages लेके आते हैं. Once again, you have a chance to win a family deal by Cheesiest. And the question is, it's really simple today. All you need to do is put on your thinking hat and answer this question. Who was the coach of the Australian cricket team during the 2020 ICC T20 World Cup? अगर आपको इस सवाल का, इस आसान सवाल का जवाब आता है, तो आपके स्क्रीन पे फ़ोन नंबर है, इस पे कॉल करें, हमें बताएं, and you might be the lucky winner today. Oh, you want that next time you sit down and watch the cricket as well. Perfect snack food. But our second, this is a big one, this is the Blue World City winner plot in the Shoaib Akhtar enclave of Blue World City. You can be my neighbour. That's right. How many times has Shoaib Akhtar taken 10 wickets in a test match? That is the question, Shoaib. Yeah, I wouldn't know the answer myself. Oh, he's one of those cricketers. I don't know the answer to my stats. I don't believe that for a second. All you have to do is answer that question and you could be in the running. Well, Very you exciting. could be Erin's neighbour. Yep, in my penthouse on my corner block. The Shoaib Akhtar enclave. Yeah. Love it. Still haven't discussed husband, right? my plot, Ben Cutting? corner plot, front of the park. I think Marty's got one as well, doesn't he? Yeah, you be nice to me, otherwise you're going to be out of the pot. Yeah, okay. You want to be on your good books for this whole tournament. Shoaib Akhtar, my favourite cricketer to ever play the game. Favourite, all If you time. listen to this, telecast, you will need to get a nice couple of villas. One for the lawn to walk around for a madam, and one to just like dine out. I'm an overwater gal myself. I think my dog is Keep on. Yeah? All right, keep it down. All right, guys, we're off to a very short break here. Of course, all of the live action is coming up right on the other side of this. Toss, playing 11, pitch, you name it, we've got it. We'll see you in a few moments here on Vantage Developers presents Game on Hair. Welcome back to Vantage Developers presents Game On Hai. Pakistan versus Canada starting just shortly, and you will be able to catch all of the action right here on PTV Sports. We're just a few minutes away from the toss in New York. हमने टॉस के ऊपर भी काफ़ी बात की कि आज अगर टॉस जीते पिच ऑफ कोर्स हम देखेंगे तो शायद बेहतर हमारे एनालिस्ट भी बता सकेंगे कि आज क्या होगा. But if he's coming to you with once again the big question, if Pakistan are on the losing end टॉस में कैसे पाकिस्तान टैकल करेगा और क्या एक्सपेक्टेड है आज भी बॉल फर्स्ट करे टीम? देखें, जो स्टैट्स हैं वो इतने को मुश्किल नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए कि अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने में, क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से जीतने की ज़रूरत नहीं. एक अच्छा मैच जीतें और अपना मोमेंटम वापस लेके आएँ. वो बैटिंग फर्स्ट या बॉलिंग फर्स्ट या फील्डिंग अच्छी
ये बताने, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि टॉसों के ऊपर कभी भी क्रिकेट नहीं खेली जाती, या मैच नहीं जीते जाते, या चैंपियनशिप नहीं मिलती आपको। तो पाकिस्तान को सिंपल सोच ये रखनी है, चाहे बैटिंग आए चाहे बॉलिंग आए, अच्छा करके दिखाना और अपने लिए वो परफॉर्मेंस देनी है जो टीम के काम आए। तो इस वक्त मुझे लगता है कि क्योंकि हमने पिच नहीं देखी भी, कुछ भी कहना वो कबल वक्त होगा, लेकिन मोस्टली मुझे लगता है कि अगर ये यूज़ पिच है तो बैटिंग पहले करना ज़्यादा बेहतर है, और अगर ये यूज़ नहीं भी है तो भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान शुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी कि वो अगर रन्स ऑन द बोर्ड लगाए तो उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है जो कनाडा की जो बहुत कोई इक्विप बैटिंग लाइनअप नहीं है, एक नॉर्मल बैटिंग लाइनअप उसको वो है मैच जितवा सकती है जो पाकिस्तान की बॉलिंग है। Gapi, I wonder your opinion as well on this, because sometimes when there's a batting lineup under pressure, sometimes without the pressure of a scoreboard to chase, it's good to put them in, don't have any of that pressure on you to try and score a decent total. But knowing what we know about this New York wicket, what would be your advice for a struggling batting lineup? Would you want to chase or would you want to bat first on this wicket? I guess I'm lucky in my position. I don't have to do either on a tricky wicket. But yeah, it's a tough one. I mean, when your back's against the wall, there are so many external factors weighing in on you, and you just got to find a way to get through and just have enough clarity around your role and what the team requires of you to be able to go out and do the job. As I've said before, it doesn't need to be pretty, it doesn't need to be flashy, it just needs to be effective. And that's something that we haven't had enough of, I think, on this wicket, is effective ways to score runs. Because the bowling, to be fair, has been very, very good on this wicket and hasn't allowed, you know, batters to be flashy or anything like that. So finding a way to get through tough periods, you know, I've said it earlier, you know, tough times don't last, but tough players do. So whoever is going to be that tough player for Pakistan needs to step up today and be a match winner. Can I ask you, if I can be so bold, what were some of the techniques you fell back on in your career and that you're still falling back on when you did go through those tough times? How did you try and dig yourself out of those little periods of poor form to your own lofty standards? I guess when I was younger, I was poor at it. You know, I'd try and hit my way out of it, and I'd end up getting out and putting the team in a much worse position. But the more you play and the more experience you have of being in those positions, you learn that when you're out in the middle, it's 2 against 11. You know, you've got to work with the guy at the other end to somehow wrestle a bit of control back of the game, and that may be, if the wicket permits, through hitting boundaries. If it doesn't, it's soaking up a bit of pressure, rotating the strike so that you're both feeling the same sort of thing. You know, it's not just you being bogged down if your mate's going all right. You know, you've got to find a way to get him on strike if he's going well, and vice versa. You know, but one thing that we've used in the New Zealand team in the past, and mainly in the subcontinent where it is quite difficult can be difficult to rotate the strike, is, you know, if there are a couple of dot balls, just go down and have a chat to your mate down the other end and just say, hey, it's okay. Dot balls happen in cricket. Think about the next ball. And from there, you create that partnership, that understanding of each other, and then things can just flow on from there. Because if you do have two batsmen to bat the majority of the overs, you're well ahead of the game, and that partnership really sets the game up for the team. So that you mean Very that good. play for each other sometime, 100%, you know? yeah. And then by that doing that, you actually end up playing for the team. Yeah. You know, You help in you're doing the job for the team. help in the cause. Yeah, what absolutely. The team needs from Winners you. Canada के हमने we talked about their batting. We know Nicholas Curtin इस वक्त बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है. उनकी बॉलिंग के लास्ट मैच में हम याद हो, हमने हेलिगर को देखा जो उनका स्पेल था, 2 विकेट्स उन्होंने लिए थे. जेरेमी गॉर्डन picked up 2 as well. फिर उन्होंने जो लेग स्पिनर अब खिलाए हैं, जुनेद स्पिनर्स खिलाए जो हम चाहते हैं कि स्पिनर्स हो और आउट करें आपके लिए. वही किया, एग्जैक्ट उन्होंने वो किया. अब पाकिस्तान के खास तौर पे अगर हम ओपनर्स की बात करें, अब लग तो यही रहा है कि क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म उन पे हुआ है स्लो खेलने पे, मे बी दे विल बी लुकिंग टू गो बिग. स्लो नहीं खेलते. देखिए, हम बिल्कुल ये बात नहीं कर रहे, ये बात समझनी है. और बाज़-औक़ात मेरे ख्याल से बाबर आजम भी और मोहम्मद रिजवान भी या बाकी बैटर्स भी ये समझते हैं कि शायद ये जो सीनियर प्लेयर बैठे हैं ये कुछ ऐसी बात है. स्लो नहीं खेल रहे, सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेलते. मैं मेरे जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, स्लो नहीं खेल रहे. सिचुएशन ये है, सिचुएशन डिमांड क्या कर रही है? सिचुएशन डिमांड ये कर रही है कि अगर एक बैटर चाहे XYZ कोई भी हो, वो जब 6 ओवर के पावर प्ले में आएंगे तो उससे क्या रिक्वायर है? या रन बॉल खेले, 120 के स्ट्राइक से खेले, 130 के स्ट्राइक से खेले, या 150 के स्ट्राइक रेट से खेले. रॉकेट साइंस नहीं है. और फिर उसके बाद वही बैटर जो है
फ़खर जमान ठीक है जी, फ़खर जमान आते हैं ओपन पे, हम आते हैं और वो 50 रन कर देते हैं सिर्फ 20 बॉलों पे। कितना का स्ट्राइक रेट हो गया? कोई 250 का हो गया, और फ़ौरन ही आगे जैसी पावर प्ले ख़त्म और वो आउट होकर चले जाते हैं। तो क्या उसने सिचुएशन के हिसाब से खेला? नहीं, क्योंकि फिर सिचुएशन ये कह रही है कि 7 ओवर से लेके भाई हम स्ट्रगल कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, तो 7 ओवर से लेके 14 ओवर या 15 ओवर तक अब आप ठीक है, अगर पीछे से 10 का रन रेट आ रहा है तो कम से कम उसको 10 रन रखें, 20 पे ना लेके जाएं। लेकिन वो आप बात करें गियर शिफ्टिंग की, हम ये नहीं कह रहे कि वो यार वो स्लो खेल रहे हैं या तेज़ खेल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे हैं। हम तो ये बात करेंगे भाई अगर मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है तो जब जो बेस्ट बैटर्स हैं वो खेल लें। अच्छा, हम तो ये बात करेंगे जब ज़रूरत है और पिच में कुछ नहीं है तो नसीम शाह सबसे अच्छे बॉलर हैं, वो आएँ और आउट कर दें। बुमराह नहीं करते क्या? बुमराह सिर्फ न्यूयॉर्क की पिच पे ऐसा करते हैं? बुमराह हर जगह करते हैं। अच्छा जी, नोकिया क्या हर जगह ऐसे कर? नोकिया ने फास्ट बॉल तेज बॉलिंग नहीं की? कितनी तेज बॉलिंग कर रहे हैं? Sorry Yunus bhai, I'm cutting you here. It's time to go to New York where Nasir Hussain is ready with the toss. Between Pakistan and Canada, the captains are ready, the match referee is ready. Baba, you've got the coin, give it a spin. Heads is the call. It is a tail. Baba, you've won the toss, what are you going to do and why? We have a ball first because early morning match and little bit motion on it, and second inning is sun out. We enjoy the first, so we are utilized for 6 in the first 6 hours. So we need to more concession in the first 6 hours. What is your team news? Any changes? We have a one change. Sam Ayub in if the card is that. Where will he bat? He's bat open. Have you had much time to discuss that defeat against India? Have you dwelled on it? Or have you looked to move on? We have a discussion, a lot of things yesterday, and then we are looking forward because we have a short time, and then in T20 you need to look forward to every match, and then we have a focus on today's match. And it's quite nice to have a quick turnaround, get back on the horse, get back playing and prove you're a better side. Yes, we have a quick change, so we are playing our good shot in this match because we have no other option. We need to win this match. And no one knows better than you. Don't take anyone lightly in this competition. Canada are a top outfit. Yes, we see a few bowlers, and I know we are the few bowlers because we are playing together. So yeah, we know each other. Go well, Baba. Yes, man, thanks. Good luck. Saad, you've lost the toss. What would you have done? I would have bowled first as well. Looks like a fresh wicket, but historically we have seen that teams batting second have found it hard to chase. So if we can put a good total on the board, we back ourselves to defend it. What is your team news? One change, Dilpreet goes out, Ravinder Paul Singh comes in. You must be pleased with the way your team is playing. You put in a good performance against the USA, actually, and then an emotional win against Ireland. You must be thrilled with the way your team's playing. Yeah, definitely. I think we have been playing good cricket so far. It's just about staying consistent, and hopefully we can repeat the performance that we have done in the last game and can have another good game. And how proud a day for you, captaining Canada against the country of your birth. It must feel special. It is a special feeling for me. Hopefully I can have a good game as well for myself as well. And they are vulnerable. They've lost 2 from 2. How important you start well and keep them under pressure. Definitely, we understand that it's a must-win game for them, so they will be under pressure. So if we can put some good runs on the board, I think the pressure will be against them. Go well, sir. Thank you. So the news from the middle is that Pakistan have won the toss. They're having a bowl. Well, it's a morning match all the way in New York City, and Captain Babar Azam does the first job right. He wins the toss and he's elected to bowl first on a deck that is apparently a little bit green, and of course being a morning match. Shoaib Akhtar, I come to you on that decision to bowl first by Babar Azam. Positive intent, try and bowl them out quickly is the plan. Well, he didn't have any other option because both teams wanted to bowl first, and he won, winning the toss. He had no choice but to bowl first. Puts himself a lot more under pressure again. What if Canada, let's say, able to achieve 130 plus? Which they did last match against Ireland, 137. Exactly. So there's going to be a lot of pressure on the batting lineup. I'm sure with the induction of Sam Ayub, it's going to be leaving a lot more impact. So I think Pakistan must win game for Pakistan, at the same time for Canada. I think again, creating a history, being a part of the history, Canada would like to beat Pakistan and put the name on the top-notch board and say we have beaten Pakistan. But it's going to be a tough game for Canada. It's going to be a very tough game for even Pakistan to win from the bigger margin.
Having said that, you know, it's going to be a tricky game once all over again. Mr. Predictor is sitting next to me. I'm going to leave all the prediction up to him because he's the guy who's been predicting everything 100% spot on. Right. What is your prediction, sir? Don't say, don't be, you know, be straight. Don't say we are chasing 140. What's going to happen? No, What's going to happen? no. I'm Say asking you something questions like straight. 90 So or I'm 80 taking over your or job. 50 or 60, please. Genuinely, I think now Pakistan are going to bowl Canada out for 98. 98. Yes. 98? Yes. No, don't be, don't celebrate Wow. just yet. We also have to no, bat. they are- भाई 98 करना Okay, भी है। then 98. Pakistan winning the game as well. करना भी है। Pakistan will chase it down. Pakistan will chase it down. We have extra batter in our lineup, celebrate so we will too chase early. that 98. All But right. Mari, Mari. so looks like they heard you again because Saim is not only in, he's opening the batting, that positive Is he? intent that we talked about, and of course, Iftikhar. He did say that at the toss that Saim will be opening the batting, so that's the clear That message. means we are from fixing that middle No, order. I now. don't know. I don't And know. They've We're been not sure listening about to that Game as on yet. here. That's what they've They- been We don't. doing. We're not sure about yet. No. He said that. Nasir Hussain asked him where is Saim batting, and Babar said he's That opening. means we are fixing our middle order. Maybe Rizwan or Babar is they are Coming down you know, again, because yeah. who is left out? Iftikhar. Iftikhar. Yeah, so it's okay. Yeah. Maybe Rizwan will bat number 6. I think he's going to come down at number 1. 1 down, Babar. So Finally. a mature decision. Finally, we see. Yeah, and I guess it's to try and make use of the first 6 overs in some way, and Saim can take those risks and you know try and get a little bit of impetus into the innings early on, and that could prove to be the difference in a chase, which we're hoping is going to be around 98, 99, like I said. But yeah, a positive move to bring Saim over. He's young, he's got some flair about him, which is really good, and he can also bowl some spin overs as well when it comes time. Seen how damaging he can be at the top of the order. Hafiz, how do you feel about that change to the playing 11? What would you have done? I think personally, they made a right decision. If Saim gonna bat first, like as an opener, so I think he can give you that flair which is missing at the moment. And Babar can control the whole innings batting at number 3. That was the, the option we opted that 6 months ago. But the captain said, like at the moment, Babar, he was not comfortable that time to bat at number 3. That's what he said in the press conference. But after 6 months again, he's doing the same thing. So now he's listening to you. That's I don't good. know. That's good. I really don't know. This good. give me confusion. So he Why learns does he his listen But to he you? when lesson I asked now. him to do this job for Pakistan cricket, he said he's not comfortable in the media. Yeah. Now why you are doing it again? Gary Pressure. Kirsten No, actually. No, but he just- learned his lesson, you know. Thank so, you, then. Yeah. And the coach just. So someone made a right decision that time. And who? And I think- Who's that yeah. guy you asked? It's Mohammad also- Hafiz. And you know, Coach Gary Kirsten came out in the media as well with some strong statements. He didn't name any names, but he said if players don't evolve, Yes. they will get left behind. Looking at the senior players, so hopefully that's been some. That's a warning very strong shots message, fired isn't as it, well. Aaron? It's a strong statement from your coach. Yes, he's Yeah. a new coach, but he's come into a situation. Why did he where have to give that kind of a statement? I think he was trying to shock his team into a change, and obviously a change needed to I happen. think he had a and- very tough meeting with the team. Oh, I can only imagine what it must have been. After what's happened, and Exactly. it also makes the players be a bit more accountable for their performances, don't they? They don't get comfortable saying, "Oh, it's okay, I'm still going to play." They've got to know that if they don't perform, they're going to get dropped. And we know that moving forward, they want a stable team, you know, to be able to have reliance on to win games and things. So, you know, that sends this pretty strong message, and hopefully, fingers crossed, it works for Pakistan. Marty, I we'd think love with for the you need to. to, why does he need to give a I'm thinking statement? about Gary now. So why does he need to give a statement? I really believe that he's sent a very clear message. Listen, you can't play for yourself anymore. But that's what the message given by someone also, but he's been Yeah. Left out. That was the message when I gave that Mr. message to everyone. Mr. Hafiz was. that if you don't play for the team, Yeah. there's no place for And- you. And you how need to play was for the how team. was that and message? everybody received? was लेकिन after फिर him. मैं यही तो कह रहा हूँ कि उसके बाद यही मैसेज मैंने दिया था Yeah, मैंने yeah, उर्दू yeah. में दिया था तो Yeah. मैंने उर्दू में Yeah, बोला yeah. था तो सारे बंदे मेरे पीछे पड़ गए Yeah. उसने इंग्लिश में दिया तो सब चीजें ठीक हो गई We were after him अब्दुल्ला because कहेगा तो गाल नहीं मरनी चलें माइकल जी। कहेगा तो सब ठीक है we were thinking like Canada that he's playing the guy 11 he do this. is up on the things screen. for Marty, Pakistan. would love for you to walk us through that Canadian 11 and see what the threats can be and of course what the opportunities can be for Pakistan to exploit. Yeah, they've gone with the same top order here. Bit of firepower there. Johnson, we know what Delaware can do, Pargat, and Curtin is having a fantastic tournament so far.
Kepa Mova, he's been able to finish off a game for Canada throughout the tournament as well. So, and they've also brought in bowling around Ravinder Paul, and I think he'll be one to look at in the middle order as well. And obviously we know what Saad Zafar can do. I mean, great left arm spinner, and also he can bat as well. And Gordon here, he's been really impressive with the ball for Canada in this World Cup. So they'll be looking to him to make some inroads early on and create a lot of pressure against the Pakistani batters. And rounding it off there, Haliger, Kaleem and Junaid rest of the bowling unit. So pretty decent side there, and they're going to prove a difficult team on this wicket, I think. And who's your key player for Canada? For Canada? I think Gordon bowling. Okay. He's going to be, he proved difficult against Ireland, couldn't get him away, and he was really difficult to get away. So I think that's going to continue tonight. Okay, what can they do against the Pakistan playing 11? Eunice, if you could be so kind. We do have one change. Of course, we said just a little bit earlier that Saim Ayub gets his chance at the top of the order at the expense of Iftikhar Ahmed. देखें, अगर मैं सैम की यहाँ बात करूँ तो इनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। इसकी वजह ये कि अगर सैम अयूब अपने वो 6 ओवर में 20-25 रन करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा बाबर आजम और रिजवान के लिए, क्योंकि पिच बहुत ज़्यादा ऑफर नहीं करी बैटर्स के लिए। तो सैम अयूब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद अगर मैं फ़खर की बात करूँ, उस्मान की बात करूँ, ये एक उस्मान को अभी तक मुख्तलिफ नंबर्स पे यूज़ किया है, तो मेक श्योर कि जब उस्मान आए तो अपना गेम खेलें जिसके लिए वो मास्टर हैं। फ़खर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो इनके पास स्पिनर्स मौजूद है अगेंस्ट, तो इनको थोड़ा सा ठीक है वो एक्सक्लूसिव खेलें, लेकिन क्योंकि ये पिच में वही वाली बात है कि ज़्यादा ऑफर नहीं है, तो मेक श्योर कि वो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लें। उसके बाद अगर मैं शादाब खान की बात करूँ, इमाद की बात करूँ, ये हमारे ऑलराउंडर्स हैं जो कि इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, बैट से तो है, लेकिन बॉलिंग के लिए अगर ये 2-1 आउट करके देते हैं हमें, तो हम अच्छे शेप में। उसके बाद हमें पता है कि हमारे फास्ट बॉलर्स क्या करते हैं। हारिस के लिए मैं एक मेरी सजेशन होगी कि वो तेज़ बॉल ही करें शुएब अख्तर की तरह, लेकिन मेक श्योर कि वो रूम ना दें। इस पिच पे जब रूम नहीं मिलते, स्टंप से बॉल मिलते हैं, और ख़ास तौर पे जब आप बॉडी की तरफ बॉल करते हो, ख़ास तौर पे नोकिया ने जितने भी आउट किए हैं, वो जब उन्होंने बैटर्स को फॉलो किया है तो जब मुश्किल डाला है। तो मेरे ख्याल से बाकी नसीम शाह को जैसे हमें पता है कि सूटेबल कंडीशन है, वो चाहेंगे जो फॉर्म वो लेके आ रहे हैं उसके चलें। शान शाह अफरीदी के हमें पता है कि वो आएंगे और 4 यानी विकेट्स लेंगे। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर जो है वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया लास्ट मैच में मोहम्मद आमिर को कैप्टन ने, जब उनको वो लाएँ जहाँ विकेट्स की ज़रूरत। तो मेरे ख्याल से हमारी जो बॉलिंग बैटरी है वो है, बस सिर्फ हमें अपने ऑलराउंडर से 1-2 विकेट्स चाहिए। अगर ये हमें मिडिल ऑर्डर में करके देते हैं तो मेरे ख्याल से हम बहुत अच्छे शेप में कि ये मैच हम अच्छी तरीके से जीत सकते हैं। By any chance, Aaron, do we have a pitch report? We're going to have a pitch report very shortly, but Roha, the Bara, Cha, Tez Gens survived to play. Is that right? What? The big 4 quick bowlers. Big 4. Did I get it right? Almost practicing there. my Urdu. But I love the enthusiasm. I love how you picked it up. But I think, well, it looks like the pitch report is ready, much to Shoaib Akhtar's delight. Let's take a little look at how the deck is playing. Whether or not we have a new strip for the game today. Pitch report time. So we're back here in New York for a very important game, Pakistan taking on Canada. So let's take a look at the pitch conditions. First of all, let's start with the overheads. Another glorious day here today. It's going to be a warm one, 23 degrees is the high, and less of a breeze than yesterday, so about 11 kph in terms of speed. So just a nice gentle breeze. Now let's talk about the dimensions here. The going downtown from where I am, 72 meters. And then because we're on a fresh pitch today, we've moved slightly over. Now from where I am, square leg is coming nicely, so that's 66 meters to my left, and to my right on the offside is 70 meters, so we're looking at a bit more of a hit on that side. Now someone who knows a bit or two about wickets, we're on a fresh pitch today. Come on, Mr. Wasim Akram, what do you make of it? Look, the whole square is similar. It's a new pitch, I can understand, but as a bowler, when I look at the pitch, my fingers were itching. There's a lot of moisture in the pitch and a lot of grass. It's nicely rolled in, but if you look closely, it doesn't look at that there's a grass, but there is a grass. And the next pitch right to me, there was a game yesterday, there's a grass now coming up. So over and all, it's one of those pitches where as a team, as a bowler, you win a toss, you elect to bowl straight away. Although the other team batted yesterday, it was a close game on a different pitch, but this is a brand new pitch. So bowling first, get the opposition out early on and get the runs. It won't be that easy. I think 130
135 will be a good total if any team bats first on this pitch, I believe. And just quickly, in terms of length, we've seen bowlers going for that sort of length into the pitch and getting bounce. You expect a bit more of that, and bouncers as well. Yeah, this is kind of a pitch where as a bowler you don't need to do much. You just need to hit the right areas, right length consistently, and consistency comes with playing longer format. Now there's in T20 format, bowlers, they bowl at times unnecessary slow ball. This is not the pitch to bowl slow ball. Seam up, hit the deck, that kind of pitch. Brilliant. Well, you've heard it from Mr. Wasim Akram. If you win the toss, today is a pitch again to bowl first. Thanks, Waz, for that pitch report. Once again, we have similar discussions going around after the toss and, of course, after seeing the pitch report, win the toss, bowl first. Shoaib, your thoughts quickly on the surface? I think it looks like a good track to bowl on. And I think it's not going to be a two-pace wicket. I hope. But it seems like a good decision. But again, अगर बॉल अच्छा बल्ले पे आना शुरू हो गया, ये 5 में 50 भी हो सकता है पहले में. चलें कैनेडा क्या Let's on see, board? let's see. कैनेडा का स्कोर प्रेडिक्ट कर लें थोड़ा सा. 145. 145. Okay, a lot of runs. Marty already said 98. Yunus Pai? 115. Oh, okay. Yeah. 15, 50. Yeah. 115. 115. TK, Professor. I want Pakistan to win, so they should get them all out in 75. 90. 90, there we go. Okay, okay. No one's telling what will happen in the second inning. No one wants to touch that. I love that. Just before we get to live action though, let's give you the questions on the prizes that you can win. It wouldn't be an episode of Game On Hair without it. So without any further ado, I'd like to announce the winner of yesterday's Parkview Winner Mobile Daily contest. And the winner was Ramzan Khan Patafi. Congratulations. You were the winner of the mobile phone yesterday, sir. Thank you so much for entering. But the question that you need to answer today to get your pause on that is which Pakistani player scored the fastest 50 in the ICC T20 World Cup history? To answer that question, all you have to do is go to the official Facebook page of Parkview City Islamabad and Parkview City Lahore. And number 2 as well, our friends at J. Junaid Jamshed, other than making the gentlemen look fantastic today, we also want you to win one of their beautiful perfumes. So all you have to do to answer that is which Sri Lankan player announced his retirement from the T20 International after the 2014 ICC T20 World Cup final. Answer with that number on your screen, Roha. Are you ready? A lot of prizes up for grabs for all of our viewers. But we have seen predictions of the first inning scores. We know what to expect. As far as the scores go, हमने भी stats में भी देखा कि 108 है average first innings score New York में. But कुछ भी हो सकता है, Professor, on the given day. Any last wrapping up comments on how Pakistan should approach this chase now that we have Saim Ayub batting and not sure उनके साथ बाबर है या रिजवान है और वन डाउन कौन है, बट कैसे अप्रोच करें स्पेशली पावर प्ले में? सबसे पहले तो इनको बोल्ड आउट करने की ज़रूरत है, ऑल आउट करने की ज़रूरत है एज ए बॉलिंग यूनिट. अगर वो 20 ओवर खेल जाते हैं तो वो 120-25 कर सकते हैं. उनकी बैटिंग में हमने ये देखा है, लेकिन हमने उनको बोल्ड आउट करना है और वो देखते हैं कितने में करते हैं. और जो भी टारगेट मिले, जस्ट टेक दैट टारगेट पॉजिटिवली. लाइक आपका जो खेलने का तरीका है वो अग्रेसिव और पॉजिटिव होना चाहिए. लेट्स सी कि पाकिस्तान इसको कैसे अप्रोच करता है, बिकॉज अभी हमें यही नहीं पता कि ओपन कौन कर रहा है, नंबर 3 पे कौन है. Right, we have some visuals of course, Mohammad Rizwan, and marking his 100th T20I and a bit of celebration on that milestone, surrounded by his teammates and of course his partner on the other end. Yunus, बड़ा एक milestone होता है 100 T20 matches. बहुत अच्छा चाहेंगे कि वो इस माइलस्टोन को जो है वो अच्छा करें. और क्या ही बात है, वो मैन ऑफ द मैच हो, टीम को जिताए, जो कि वो लास्ट मैच में फिनिश ना कर सके. और जब और सीनियर्स प्लेयर से जब परफॉर्मेंस की ज़रूरत हो और वो कर दें तो क्या ही मज़ा है. आई होप कि बेस्ट ऑफ लक टू हिम. आज ट्रॉफी नजर नहीं आ रही. आज जो है ना वो अच्छा खेलें और अपने टीम को जिताएं, जो कि लास्ट मैच में वो नहीं कर सके. तो क्या ही बात है. Marty, in that playing 11, it actually listed Bubba as opener and Rizzy coming in at 3. Do you think that's what we're going to see today, straight out to the middle? I guess so. Good option. Saim can take a game away pretty quickly from the opposition, so
having one of Baba or Rizwan opening is a good idea. Right, I think we're live for the live action. Gentlemen, thank you so much for being part of the show, and Erin, thank you for your support as well. We will be back after the match for all the post-match analysis. Tab tak ke liye New York ka match enjoy kare. It's Pakistan taking on Canada. We will bring you back after the match only on Vantage Developers presents Game On here.